right? I think I'm qualified to do it because I've cracked it 21 times. Ab 22 ho jayega. Pretty much every time that I have given it, I have cracked the exam. 99.93, 95, 97, 99 के बीच में मेरा percentile आता है. Always, I've got 99.99 three times, but never touched 100, right? So, been very close to 100 three times at least. 99.99 जब भी आया. But anyway, that's a different thing. I don't sweat too much about it because I just give the paper without any practice or any preparation. And as you know, being a coach for something and actually playing that match is very different. So you have to have that perspective, which I don't obviously do. I've made peace with myself कि 100 आना होगा तो अपने आप आएगा, वैसे ही आएगा. Otherwise नहीं भी आएगा तो ठीक है, it's okay. I'm not doing too bad. So so let's, I mean, of course, when you talk about the CAT, there are three broad areas. Right? I started taking it after passing out of IIM Bangalore. My first attempt was to get into IIM myself, and I got in to IIM Bangalore. And CAT used to be very different at that time. It was completely a speed test. If I remember correctly, my first CAT was my first CAT में there were 175 questions in 120 minutes, and I had solved something like 170 of them. And not just me, the general people who would qualify would solve anywhere between 150 to 170 questions. And if you look at now where it has reached, if you solve 35 to 40 good questions into us, you are almost going to go into an IIM. So you can see basically the ratio of how many people. It's not that we were much smarter at that time and hence we could solve so many questions. It's just that the questions were straight one-liners. एक आरसी पैसेज होता था, उसमें 12 क्वेश्चन आते थे. अब आरसी पैसेज होता है, you're reading the same length of passage, but you're getting 4 questions on it. Right? The quants questions were straight one-liners, etc. So obviously the dynamics has changed a lot in that context, and the CAT has also evolved a lot in terms of it has kept shifting in terms of how many sections there have been in the paper. So there was a time when there were still full sections. In fact, एक time होता था जब verbal ability, I mean, the CAT I took, in that verbal ability reading comprehension, the first CAT I took, verbal ability reading comprehension quants to 3 separate sections, and DILR was the 4th section. So there were 50 questions on this, 50 questions on this, 50 questions on this, and 25 questions on this. This was the pattern of the CAT at that time. Then it moved to a 2-section exam. Late 90s, mid 90s में ये था, early 90s में, mid 90s it became a 2-section exam. So one section was this, and the other section was this. Then 1999 it became a 3-section exam, and after that it's always remained a 3-section exam. So from CAT 1998 से it became a 3-section exam, and you essentially split the section to verbal ability reading comprehension, then you split it to data interpretation, logical reasoning, and the third was, of course, quantitative aptitude. So this has been the pattern for the last 25 years now, and it's been set on that in 3 sections. Of course, the number of questions and the number of the time limit has kept changing from time to time. So it used to be 120 minutes, 98, 99, 2000, somewhere around 2003, 2004, they made it a 135-minute exam. Then it came down back to a 120-minute exam. Then it became a 180-minute exam, 3-hour exam between 2017 2020. And then finally, after COVID, it came back to a 2-hour exam. And hopefully they've now settled down into a pattern, which is a 2-hour exam. So broadly, as I said, people are interested to know how do I crack the CAT.
So there's no rocket science in cracking the cat. It's about controlling the controllables, and the controllables that the events you want to create. It's very simple. There are just two things that matter when you go into the exam. One is how many attempts you make, and the second thing is how many corrects out of that do you get. It's as simple as that. There's no rocket science of how you crack the cat. You get, all of you, when you come here, based on your knowledge of this exam, or your having seen your elder brother, sister, uncle's cousin, etc., whatever, having taken this exam, there's a comfort percentile each one of you has. What I mean by comfort percentile is, okay, itna mere ko aa jana chahiye. I believe I can get this much. So what is that number for you? I mean, I've heard different numbers. 80 भी सुना है मैंने, 70 भी सुना है, 90 भी सुना है, 50 भी सुना है. So there's some number that is there in your mind. Okay, I think I can get this, based on what you've seen your seniors in college doing and all also. है ना, वो होता है ना, अरे इसको आ गया 82, तो मेरे को तो उतना आ जाएगा, वो वाला, right? So that number is there in your mind. All of you have that number when you start off, right? So what is that number? Can I hear a few? 98. Good. Based on what are you saying 98? I know a few people, like I have this brother, he is from Ahmedabad itself. So after talking to him, I got so much knowledge about the exam, like what things these people are looking for. Yeah, and good. There are certain things. So like, you feel 98 is doable, yeah, pretty doable. Good. Yeah. Other numbers? There's no right answer or wrong answer to this. 90? The only wrong answer I've heard is 100, because 100 nobody can guarantee. Right? कि मेरे को 100 तो आ ही जाएगा. That is something that I tell him कि ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, तुम पढ़ा दो यहाँ पे आके. ठीक है. So 90 है. What else? Any other representations? Is anybody at 70? Right? Or anything else? Any other ranges? 95 hoga. I mean, and I'm not talking about fine tuning it to anything. Does this broadly look at the numbers you're looking at? To get here, you need to be, now 3 lakh people are giving the exam. So to get to 70 percentile, it means you're in the top 90,000 people. Here you're in the top 6,000 people. And here you're in the top 30,000 people. So broadly, this is this thing, right? And so what is the mechanics of getting these percentiles, right? And then the holy grail number is 99. 99 aa jayega, so I've done really well, right? And then of course you've got the 99.9s plus, which kind of guarantees you entry into one of the top B schools. And I'll talk about why you should give it your best shot when you're talking about a B school. I'll just come to that. But अगर ये spectrum देखते हो, so the only thing that, I mean, you don't get these percentiles. What you do is you do this, and this happens automatically. You don't have to do anything for this to happen, right? So what is the spectrum? जैसे इस साल का जो estimate है, 90 percentile will be what? 50 marks, sure? 45, 50. 45, 48, 50 marks. So 90 percentile, I mean, I hope you know that's a +3 -1 exam, and 0 marks for for TETA questions and not attempts. TETA is where there's no options, right? So if you want to score 50 marks, and currently there are 66 questions across 3 sections, we'll try to look at the sectional breakup later. Let's first focus on the overall global perspective. Okay, if I want to get 90, या मेरे को अगर 90 मेरा comfort percentile है, तो मैं कितना questions जाके solve करके आऊँगा, right? So the other factor that depends, okay, what is your accuracy rate? कितने attempts करना है, वो accuracy rate पे depend करेगा. So to get 50 marks, to get 50 marks in a +3 -1 exam, if your accuracy rate is around 85 to 90, that means every 5 questions you do, 4 of them are right, right? Approximately 4 of them are right. So what do you need? You need to solve 20, 22, 23, maybe 25 questions. Solve 25 questions, get 20 right, 5 wrong. You're in the 50-55 range. एक आध और extra गलत भी हो गया तो भी 50 plus है तुम्हारा. So
So somebody who's scoring 90 percentile is attempting 25 questions and getting 20 of them correct. Right? What is the number for 98? 98 would be at around 70 marks this time, approximately. 640 questions. So last year, I think at 21, 22 में the 90th percentile was around 50. 90th. हाँ. तो इस साल और कम होगा. चलो ठीक है, 50 मान के चलते हैं. ठीक है. So 98 percentile this year is expected to happen at around 65-70 marks. 70 marks. Last year maybe 75 marks पे था. तो अगर broadly देखते हैं तो we are talking about 70 marks. Yeah, it became very much tougher than last year, comparatively, right? So, I mean, for the unprepared students, especially, it was quite tough. There's nothing to stop you from scoring a 90 or 100 in the exam. This thing, I'll come back to that. So, to score 70 marks, you need around 35 attempts with around 7-8 errors. तो अगर 27-28 राइट रहेगा तो तुम्हारा 80-81 मार्क्स बन रहे हैं +3 से, और 7-8 गलत भी हो तो 70 प्लस आ जाएगा तुमको. So this is 35 attempts with 80% accuracy. Right? Why I get my percentiles is because my level is 45 attempts. I think I attempted 52 questions this year. So, but 45 plus attempts with 90%, 85-90% accuracy, you will end up with a 100-110 score, which will be a 99.7, 99.8, 99.9 percentile. Right? So the story is here. The story is here. If you think you can do this, let's say, ये तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो, so you are confident of solving. If I make an assumption कि okay, you're going to do equally in all the 3 sections, you're confident of solving 8 questions each on each of the 3 sections. Jumping to this is 11 to 12 questions, just 3 questions extra. How many we are talking about in verbal? We are talking about out of 24 questions. In data and prediction, we are talking about 20 questions. In quants, we are talking about 22 questions. It's not out of 10 questions or 12 questions that you want to do all 12. So there's a lot of leeway to leave questions out. So we are talking about just a jump of 3 questions extra. And that shifts you from 90 to 98. मतलब तुम यहाँ पे 14 क्वेश्चन छोड़ रहे हो 22 में से, यहाँ पे 11 क्वेश्चन छोड़ रहे हो 22 में से. Right? And when the stakes are so high, for your career. I mean, I don't think इसके पहले मतलब बचपन से लोग तो वही बोलते हैं, एक ही बात सुना है, मैंने भी सुना था बचपन में अपने, बेटा पढ़ाई करो. राइट? तो बेटा पढ़ो सिंड्रोम तो हम लोग के जिंदगी में 4 साल से आ गया था. राइट? दादा बोलते थे, दादी बोलते थे, नाना बोलते थे, नानी बोलते थे, बेटा खूब मन लगा के पढ़ो. एज अ 4-year-old, इफ यू आस्क योर दादा दादी क्यों पढ़े, तो उनका रिस्पॉन्स होता, अब तुम उस पोजीशन में आ गए हो, कोई 4 साल का बच्चा दिखेगा तुम भी बोलेगा बेटा खूब मन लगा के पढ़ो, आशीर्वाद देता हूँ तुमको. क्यों? वो बेटा पूछे क्यों पढ़ो, तो उसका आंसर भी है. हम लोग सोसाइटी में उसका आंसर तो घूम रहा है, पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बनोगे. ठीक है? तो 4 साल के बच्चे को तुम अगर बोलोगे कि पढ़ाई करोगे बड़े आदमी बनोगे, तुमको पता है वो पूछेगा अच्छा ठीक है मैं पढ़ता हूँ, तुमने बोला तो पढ़ता हूँ, कब बनूंगा बड़ा आदमी, तो तुम बोलोगे मुझे भी नहीं पता है, मैं बन जाऊँ उसके बाद बता दूंगा कि कब होगा ये. तो you actually when that 4-year-old you is entering the education system, you are entering a tunnel. Right? यहाँ परफॉर्म करके कुछ मिलने नहीं वाला है. Right? क्या the difference is what? कि ठीक है, you are a 96 percenter in 10th versus you are a 78 percenter in 10th. कोई पूछेगा क्या करते हो तो बोलोगे 10th में पढ़ते हैं. दोनों लोग वही बोलते थे. राइट? अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट है और ये ठीक ठाक स्टूडेंट है. दैट्स इट. दैट वाज द डिफरेंस. लेकिन अब जो आई मीन ये टनल, ये 20 साल का टनल था, 18-20 साल का टनल था, इन विच यू आर एंटरिंग द एजुकेशन सिस्टम. बट व्हेन यू कम टू द कैट दिस थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट a 6 month to 1 year effort
that can completely change your outcomes in life inside out. Completely change who you can become. Right? And I don't know, तुम लोग, you have been, I mean, a lot of people I meet at your age group, they look at the starting packages, what am I currently being offered versus if I do an MBA, what will I get to? Right? So ये jump तो तुम लोगों को पता है. That jump is depending on what your current this thing is. A minimum 3x jump to maybe if you do it from a top B school, it's a 3x jump to maybe a 7x jump. जिसको अगर तुम अचीव करना चाहते हो अपने करियर में through normal growth paths, it'll take you maybe 10 years to get there. Right? So one education degree is going to give you in 2 years what you will normally get out in terms of money outcomes in 10 years. But this is not just the story. The bigger story here, which your generation maybe does not know it because you've not been exposed to it, but being from the IIMs and having this privilege to have lived this life where I've guided hundreds and thousands of students into those colleges, and also I have my batchmates and close friends who are from there. When I look at this story 25 years later, how does it change? Where does it go? So one guy starts his career at X and grows in life. Another guy takes this jump from the X point, gets to a 5x, 3x, 4x, 5x level, and starts growing from here. Right? Now, I hope you know that I often start a lot of my speeches with a question like, who's the CEO of Microsoft or who's the CEO of Google? So I get those answers, Satya Nadella, Sundar Pichai, etc. And then I ask them this question, okay, let's change the date. We are in 2023 today. Who's the CEO of Google? You will tell me Sundar Pichai is the CEO of Google. I say, let's change the date to 2053. Who will be the CEO of Google in 2053? So the answer would be, of course, not Sundar Pichai. He will have happily retired by that time. So the question then comes, okay, 2053 में Google का CEO कितने एज का होगा? At what age does Google elevate an executive to become the CEO? 70? नहीं ना? 45, 50? That's the age group. So let's say there's a person M who's the CEO of Google in 2000, who's going to become the CEO of Google in 2053. So he'll be around 45 to 50 years old at that time. Which means if you can somehow trace M today, he'll be in your age group. And if you ask him क्या करते हो, his answer will be similar to what your answer is. So what happens? Every company, all the top positions in the world, in 2043 they all open. And this भीड़ of which you are the part of to start with right now, जिस भीड़ के पार्ट हो तुम लोग अभी, उसी भीड़ से कुछ लोग ब्रेकआउट करके यहाँ पहुंचने वाले हैं. ठीक है? और ये ब्रेकआउट होता कैसे है? जो अभी टॉप पे हैं जो लोग, उनका you know what their job description is, job responsibilities. Why I'm telling you all this is because of the fact that when you prepare for this exam, you want to give that extra effort. आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थके हुए हैं, घर पे कोई फंक्शन था, बहुत थके हुए हैं, and you have that internal thought कि 2 घंटा पढ़ाई कर लेता हूँ. At that time, you should not lack motivation. But as I said, one premise should be very clear to you. ये तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि 6 महीना पढ़ाई कर लो, 1 साल पढ़ाई कर लो और तुम्हारा पूरा लाइफ का ट्रैक चेंज करने वाला है. It did not happen in the last 18 years of your education career. It's going to happen now. Right? Which is why one of the premises of CAT Prep, especially at Mindworkzz for me, is, I mean, we are, of course, our thought process is very clear that
quants padhana hai, DI padhana hai, LR padhana hai, etc. But it's about performance. It's about creating the performance out of the people who come to us. And performance, हम थोड़ा कम भी पढ़ा दें, लेकिन performance अगर तुम motivated हो और तुम inspired हो, तो inspired you has a very different outcome. So I was telling you this story कि what is the job responsibility of the guys who are at the top. सुंदर पिचाई आज जब बैठता होगा अपने ऑफिस में तो क्या उसका thought process होगा? What is he trying to do? He has to protect revenue, he has to protect growth, all that is there. He has to strategize for the next 5 years, 10 years. He has to build a company to that level where the company wants to go. उसको एक challenge दिया गया है. And very importantly, he also has to create the next level of leadership. तो वो जो X से स्टार्ट करता है और 5X से जो स्टार्ट करता है, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप जो होते हैं, एंड कोई भी कंपनी को देख लो, कोई भी कॉर्पोरेशन को देख लो दुनिया के, टॉप में 5 लोग ही चला रहे होंगे उसमें, 5-7 लोग ही चला रहे होंगे. एंड दैट्स वेयर द salaries and the packages become astronomical. You can't even imagine it. Right? And we saw this in our batch. कि हम लोग through our journey up the corporate ladder, मैंने तो corporate छोड़ दिया था very early, but I've seen it very closely in a lot of my friends. कि through their journey 20-25 साल में जो वो लोग salary कमाए after being IIM graduates, when they actually hit the top, they, in 2 years, after reaching the top, they earned 5 times what they had earned in 20 years. Because the packages are complete, you can't even imagine it. So, what is the problem with the X guy versus the opportunity the 5X guy is? When I am one of the top 5 people of my company, trying to decide my next level of leaders, I look at my up rank. Okay, who are the people in my channels? Who are the people coming up through the various departments in my company? I keep looking at them. I keep interacting with them. And for the X guy to reach this point, and from so for the 7 people here, there'll be a pool of maybe 80 to 100 people here. So only if you reach this pool do you have a chance to get elevated. So you have to be one level just below that. And the problem with X, the career path of X, is by the time you reach this, you're 50-55. And when you're 50-55 and you reach this point, they will only plan your retirement. They will not plan your elevation. What a 5X does is you reach this point at 40. And that's the point. If you want to plan a career in today's world, that's what you have to plan. And of course, you never think about money. You never focus on the money happens by itself. You focus on the impact you do with the work you do. Just keep doing that and everything else will happen. So if I was in your place today, my perspective or my target, why I want to get to a B school, where do I get the energy from to do the preparation that is required? Because bottom line, देखो एक चीज होता है. You want to perform in the CAT. So you want to be excellent for those 2 hours inside the CAT. The week before CAT, if you have not been excellent and you have not been executing excellence in your mock tests, etc., you can't be excellent there certainly. ऐसा नहीं हो सकता है कि mock test में 30 marks आ रहा है और CAT में 100 marks लेके आओगे. So bottom line वो क्या होता है कि this, if you keep going back on time, it starts boiling down to how productive and how inspired you were in the week that you spent from 3rd December to 10th December. The quality that you start executing here, if you don't execute quality here and you are casual about what you're doing, like you have been through your past life, because nobody's told you. If you continue that casualness for the next 50 weeks, you will reach the CAT as a mediocre student who does not know how to control what is happening inside the exam. So if you want to take this up,
you have to start changing how you are behaving in your study sessions. And one thing I look very closely at my students and I try to advise them to do this. And that's why in our course, apart from the quants, DILR, etc., I do a lot of personality and study courses, study improvement courses, which I focus on to ensure, because मेरे को एक चीज बहुत important है किसी भी student को देखने के लिए, right? And you can I'll give you an analogy. तुम suppose आजकल तो सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इंडिया में, सब बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज सबका वही है सपना है कि आईपीएल खेलना है. तो तुम एक क्रिकेट एकेडमी में चले जाओ और 8 ईयर ओल्ड्स के का नेट प्रैक्टिस देखो. उसमें 5 बच्चे हैं, ABCD, और बी जो है वो कंप्लीटली फोकस्ड है, इंटेंस है अपने सेशन में, और AC और D और E कैजुअल है. So the chances of B's success in that game is much higher than others. Of course, he has to execute it over 10 years. वो सब factors हैं अभी which further needs to be there. But by default, the guy with more focus in, I mean, how do you become a great cricketer? Will it happen without focus in your practice sessions? When you go to the nets, वहाँ focus नहीं करोगे तो will it happen? Right? So if you are trying to advise an 8-year-old kid कि वो बोलता है मेरे को IPL खेलना है, मेरे को इंडिया के लिए खेलना है, तुम उसको एडवाइस कर रहे हो एज अ कोच, तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे कि जब वो आता है दिन में खेलने के लिए मेरे पास, या सुबह जाता है अपने कोच के पास, 10 से 12 का सेशन है उसका मान लो, या स्कूल से आके 3 से 5 जाता है, तो वो 2 घंटे में उसका इंटेंसिटी क्या है? वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, दैट्स अ स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट. देन देयर आर रिक्वायरमेंट्स, ही हैज टू बी कंसिस्टेंट ओवर इयर्स एक्सेट्रा. बट अगर एवरी प्रैक्टिस सेशन में इंटेंसिटी नहीं है, तो the chances that he'll do anything in cricket is 0. Why is cat prep any different? Why is cat prep any different? You'll be sitting down tomorrow morning, tomorrow evening for a study session where you define कि okay, next 2 hours I'm going to study. उस 2 घंटे में इंटेंसिटी अगर नहीं है, तो what are the chances that you will do well in the exam? उस 2 घंटे में इंटेंसिटी है तो कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज वो इंटेंसिटी तुमको 1 साल के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, एवरी सेशन दैट यू हैव. बट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज एन इंटेंस हाई क्वालिटी 2 hours सिट डाउन स्टडी सेशन. जिस दिन तुम वो करना स्टार्ट कर दो, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी डिफरेंशियल स्किल, नॉट जस्ट इन स्टडीज, इवन इन वर्क. जो एग्जीक्यूटिव को कोई भी स्टार्टिंग ऑफ करियर कर रहा है अपना, देखोगे जो 3 घंटा बैठ के काम कर सकता है इंटेंस, he'll always be in demand. और नॉर्मल लोग को देखोगे वो आधा घंटा 40 मिनट बाद बोर हो जाते हैं. And you have it in you. Do you have that intensity in you? The answer is yes, you have it in you. It's just that you are not able to bring it to yourself. And I'm telling you this because myself, I was a very mediocre student right through school and college. It was not because I was not intelligent. It got proven that I was quite intelligent later once I started taking the CAT. It was just that there's no focus. And there are a lot of self-doubts inside the mind. Doubts कहाँ से आ जाते हैं? And this is one thing that is very, I mean, I think it will resonate with a lot of you. The 18-year-old me, if somebody told me that you will go to IIM, ठीक है, और IIM में तुम जाके टॉप करोगे एक्सेट्रा, तो आई वुड हैव सेड कि मैंने तो सुना है कि IIM बहुत टफ है, कैट बहुत टफ है, मेरे जैसे लोग कहाँ करेंगे? राइट? तो कोई बोलेगा नहीं नहीं तुम कर सकते हो. तो देयर इज अ बैकग्राउंड ऑफ 15 years of academic underperformance. 15 साल का academic underperformance है मेरे पास एविडेंस के लिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ.
वो मेरे रिजल्ट्स हैं पुराने. तो the 18-20-year-old me thinking about CAT, the first hurdle in my mind was, and I could crack the exam only after cross that hurdle. My first hurdle was कि सुना है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग करते हैं, टॉपर्स करते हैं सिर्फ, मेरे जैसे लोग तो नहीं जाते हैं. तो मेरे जैसे लोग कौन होते हैं? मेरे जैसे लोग होते हैं जिनका मीडियोकर रिजल्ट रहा है. मैं मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ, कभी जिंदगी में टॉप नहीं किया. फॉरगेट फॉरगेट स्कूल का टॉपिंग, सेक्शन का टॉपिंग नहीं किया. 10 के बाहर आता था सेक्शन में मैं. तो ऐसे लोग थोड़ी कैट क्लियर करते हैं. And what happens is through our academic life, we have executed mediocre study sessions. Mediocre study sessions execute किया है, जिसके कारण mediocre performance आया है, जिसके कारण mediocre results आए हैं. So this is a loop. I continue executing mediocrity in my study sessions. I'll keep getting mediocre performance. I'll keep getting mediocre results. ये loop है, unending loop बन जाता है. और उसके बाद जब मैं कोई बड़ा चैलेंज उठाता हूँ अपने लाइफ में कि अच्छा IIM जाना है मुझे, IIT जाना है मुझे, when I pick up that kind of challenge, I look at this, ऐसे कि मेरे से तो होता नहीं है. And this becomes kind of a sentence for me. कि मेरे से लोग तो नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज मेरे से लोग तो मीडियोकर रिजल्ट्स लाते हैं. तो कभी ये सोचा है कि इस चीज को चेंज करके देखते हैं? इस चीज को चेंज करके देखते हैं, शायद ये चेंज कर दे. दिस बिकम्स अ बिलीफ सेंटेंस फॉर अस कि मैं तो मीडियोकर स्टूडेंट हूं. And tell me, forget everything else. Forget the jing bang about CAT being a very tough exam. If somebody can solve 8 questions, why can't he solve 11 questions out of 22? Except the fact that he's not done justice to the way he's worked. What is the difference? Let's go for an analogy. I am playing tennis. I'm on the tennis court. My opponent hits a ball and I want to go to the corner and I want to hit a winner. The difference between a winner and a ball going out is just a small fraction on my racket, how my racket swings. Right? So Federer is Federer and Nadal is Nadal, or Djokovic is Djokovic, because they can do that 10 times out of 10. I can do it maybe 2 times out of 10. Right? Similarly, inside the CAT, when you face a question, whether it's verbal, quants, or data interpretation, logical reasoning question, when you face a question, there's a very small line between being able to solve it and somebody who can't solve it. So किसी भी क्वेश्चन के साथ एग्जाम के अंदर 3 तरह के इवेंट्स होते हैं. There are 3 kinds of events. You try to solve it, you solve it wrong. Second event is you try to solve it, and while solving it, you hit a roadblock, you don't know what to do next. फंस गए. Third result is you try to solve it, and you get to the answer. अब ये तुम्हारे साथ 8 बार होगा कि 11 बार होगा कि 15 बार होगा, वो तुम्हारे एवरी स्टडी सेशन फ्रॉम नाउ पे डिपेंड करेगा. बिकॉज एग्जाम में तुमको होता क्या है, क्वेश्चन सामने आया, एंड दिस एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम लाइक योर कॉलेज एग्जाम जहाँ पे यू हैव इनफाइनाइट टाइम, कुछ गलती भी कर दिए तो वापस आ गए, उस पर फिर से काट के लिख दिए. दिस नॉट लाइक एन एग्जाम लाइक दैट. With every question, you'll have one opportunity. Question will come in front of you. You will have maybe 20 to 30 seconds to decide to think about it. In those 30 seconds, you have to take a call. What am I going to do with this question? How I'm going to solve it? And all the training you do is for those 30 seconds. I should make the right decisions about what is going to be my solving process to this question.
So Virat Kohli is Virat Kohli because not because he looks good or he has got a great moves while he dances or whatever. He's Virat Kohli because when the ball is leaving the bowler's hand to the point where it comes to his hand, to his bat, in this time, he's better than you and me. And he's better than everybody else in the world. Maybe there are only 5 people comparable to him. So when does Virat Kohli become Virat Kohli? When the ball leaves the bowler's hand, and that fraction of a second, how he reacts to it. उसके बाद जो वो करता है, बल्ला घुमाता है, ये करता है, वो सब तो हम और तुम भी कर सकते हैं. उससे बॉल खिलवा लो, बाकी बल्ला वाला तो हम भी घुमा देंगे. So the training that he takes is for this. So when you are trying to train yourself, you have to try to train yourself. And your intensity, I often tell people that your CAT prep, when you prepare for CAT, you have to think like an Olympic athlete is thinking. You have to think like Neeraj Chopra is thinking कि वो extra half a meter कैसे आएगा? 89.5 में फेंक देता हूँ, 90 कैसे करूँगा? And every practice session is towards that. Everything it does around is that. Please stop thinking of yourself कि एक और एग्जाम दे रहा हूँ. जिंदगी में एग्जाम तो देते आए हो तुम. Please change that attitude. And you have to be thinking about yourself as the hero of the story. Yeah, I'm going to be a big hero because I'm going to do something that I'm really proud of. Don't bother about the results. Results will come by themselves. You can switch on the AC, I think. The results will come by themselves. You take care of your controllables. The results will happen by themselves. Okay? So this is the first conditionality that when you start preparing for the CAT, this is the first conditionality that every study session has to be inspired. कभी बीच में तुम्हारे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में अगर तुमको लगता है कि अरे फिर से पढ़ रहा हूँ, नहीं मन कर रहा है, टेक अ क्लीन ब्रेक. 4 दिन मत पढ़ाई करो. बट व्हेन यू कम बैक टू इट, वो कैट में बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है. दैट्स अगेन अ मिसकंसेप्शन. मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और टॉप कर जाओगे? 35, if you solve 35 questions this year, if you had solved 35 questions with around 25-27 correct, you will get 99 percentile. और कौन सा एग्जाम है दुनिया में जो बोलता है कि हाफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लो एंड यू आर डन? एंड योर अपॉर्चुनिटी इज दैट ओनली. जहां तुम्हारा प्रॉब्लम है वहीं पे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज तुम्हारे 3 लाख कॉम्पिटिटर में से 2,90,000 लोग उठने नहीं वाले. वो सोते हुए ही प्रिपेयर करेंगे, वो मीडियोक्रिटी ही एग्जीक्यूट करने वाला है. So if you rise up to this challenge and you start picking up the inspiration for yourself, things are going to happen. You put on the AC. So it's going to be, I mean, so this is the perspective then that we need to bring to the table. And I'll remind you this again. No time in your life ever have you had this opportunity कि 6 महीना अपना best दे दो, give it a best shot for 6 months, and suddenly your expectations out of your outcomes change completely. In our generation, the differential, I'm not talking about somebody who succeeded and became huge in terms of becoming a billionaire or whatever, but the differential between making that jump versus not making it in money terms was somewhere between maybe 1 to 2 crores of net worth to 50 crores of net worth. 50, 100, it could be more than that. This was our generation's delta out of creating that in your careers. Life is very different once you reach this point. I mean, in fact, I often talk about this to people. The moment you hit 10 crores plus asset-wise, after that you're not bothered about money. You don't need to be. But even if your assets give you 10% return, they'll give you 1 crore a year.
8 lakhs a month is huge in today's world. मतलब बहुत सारे, मतलब ठीक है आपको हेलीकॉप्टर खरीदना है और तो शायद कम है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल जिंदगी जीना है, एक गाड़ी ले लेनी है 2 करोड़ की एक्सेट्रा, इट्स प्रीटी ओके. So in our generation, this was the gap. In your generation, it's going to be a 10 versus 200, maybe 500, because the way India is growing, the way the economy is growing, you're going to have people, somebody who does, who breaks into the top of their company, of their organization, of their careers. The net outcome of that is going to maybe 3 to 500 crores. And that should be a challenge. I should become someone where people start waiting कि मैं कब मरेगा तो इसका सब assets मेरे को मिलेगा. ठीक है ना? So you create that and you have the opportunity. And you know, there's more fun. मतलब बहुत लोग, हम लोग एक और फैक्टर देखते हैं कि पढ़ाई करना है मतलब बहुत बोरिंग आदमी बन गए हम. There's more fun in this life once you reach that point. मतलब मेरे आईएम के बैच में कोई नैनीताल से फोटो नहीं डालता है कि नैनीताल चले गए थे छुट्टी में. ऑल द फोटोज आर 3 दिन की छुट्टी थी, पेरिस चले गए थे. यू डोंट बॉदर. नैनीताल holiday will cost you maybe 1 lakh of rupees. A Paris holiday will cost you 5-7 lakh rupees. You're not even touching your interest income completely to do a Paris holiday for 3 days. Why will you not do it when you want it? तो सिंपल स्ट्रैटेजी है. एक घर पे जाओ, एक नैनीताल का फोटो लगा देना और एक पेरिस का फोटो लगा देना, और अपने आप से एक क्वेश्चन मार्क पूछ लेना. रात को 11 बजे जब बैठने का टाइम आता है कि बैठ के पढ़ाई करना है, एंड यू लूजिंग द मोटिवेशन, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, बेटा कहाँ पे हॉलीडेज मनाना है जिंदगी का? वेयर डू यू वांट टू बी? डू यू वांट द फ्रीडम? ठीक है, उसके बाद हो सकता है तुम नैनीताल ही जाओ बाद में भी, लेकिन डू यू वांट द फ्रीडम? आई एम गोइंग टू नैनीताल नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द मनी, इट्स अ चॉइस. वो अलग बात है. So coming out of this, ये मेरा पहला premise था कि if you want to make it big from this point, and CAT is going to be that opportunity, I want you to make sure that you are inspired. And the only condition I tell my students, this condition, if this is picked, we are good. End of the year, whatever the result happened, you should be happy with the way you worked. That's it. That gives you the best chance to actually make this exam. So the next part comes, okay, now what are the mechanics, and what do we learn about this? So I told you about this. This I already talked about. 3-hour pattern, pre-COVID, and after COVID, it has become a 2-hour exam. This CAT 17 to 19 was 1 hour, 1 hour, 1 hour on each of the 3 sections. This year it has become 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. There is a big difference between the two. एक बिग डिफरेंस ये है इसमें कि एग्जाम के अंदर रिकवरी टाइम नहीं होता है. सो इसको तुम सॉल्व कर रहे हो, एक आरसी पैसेज में फंस जाते हो 10-12 मिनट के लिए, और तुमसे सॉल्व नहीं होता है वो, या गलत हो जाता है, तो यू डोंट हैव मच, यू जस्ट हैव 25 minutes more to recover. In a 1-hour exam, you had 50 minutes more to recover. So there's no recovery time now. So the quality of your, I mean, ultimately it's here. The question comes from in front of you. You have 20-30 seconds to take a decision about how I'm going to solve this. And then you have to execute the steps to get to the answer. The 99 percentilers, the 99.5 percentilers, the 100 percentilers create this event, as I told you, 45 times. I create this event 45 to 50 times in the exam. Somebody who can create 35 such events, if you can create 35 such events, you're going to be 99 plus. All those of you are confident कि 90 तो आ जाना चाहिए मेरे को, are confident of creating 25 such events.
जो बोल रहे हैं 70 आ जाना चाहिए मेरे को, आप लोग को 15 वैसे इवेंट्स क्रिएट करना आता है, या यू नो दैट आई कैन क्रिएट 15 सच इवेंट्स, right? So, so coming back, as I said, one factor that has happened is that the 40-minute exam has reduced the bouncing back possibilities, which is good and bad, because bad part is it's become more difficult for you. The good part is that it's become more difficult for your competition also. So if you can learn to manage the 40-minute exam, then more people are falling by the wayside because they have not learned to do it. और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हो, तो यू हैव टू बेसिकली थिंक ऑफ, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस, you have to think about ki how do I, what differential skills do I create, and not just competitive exam, anywhere in life it's about differential skills. तो एक एप्टीट्यूड एग्जाम में हाउ डू यू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब तुम तैयारी करते हो तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना। कैट टाइप के एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनता है, क्या एप्टीट्यूड एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनता है? दो तरह से, देयर आर टू वेज टू डू इट, फंडामेंटली देयर आर टू वेज टू डू इट। वन वे टू डू इट इज I can solve the question, he can also solve the question, but I solve it faster. So that's one source of competitive advantage, right? In an exam where questions are easy, where questions are easy to normal, this is a huge source of competitive advantage. The other source of competitive advantage is others can't solve these questions, I can solve them. मेरे को सॉल्व करना आता है। CAT this year, especially in quants, gave a very clear signal that this competitive advantage they are going to reward, even in DILR. तुमको सॉल्व करना आता है, क्वेश्चन के अंदर फंसाएंगे हम तुमको, तुम सॉल्व कर लो, मार्क्स ले जाओ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाओ, बिकॉज बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। So going for CAT 24, you will have to prepare for both these advantages, right? And I'll come section wise onto this, but ये दोनों advantages के लिए काम करना है तुमको। Solve करना आता है मेरे को, लेकिन I am better than others because I do it faster. So what does it mean? What does it mean verbal, let's say? तो VRC जो story है, ये थोड़ा dramatized PPT है। VRC स्टोरी जो है वो ब्रॉडली 22 और 23 में ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, इट्स नॉट चेंज मच, इफ एनीथिंग 23 वाज स्लाइटली इजियर। VRC का स्टोरी, द प्रिपरेशन स्ट्रक्चर, द प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव्स रिमेन काइंड ऑफ सेम। और वर्बल और आरसी में करंट स्ट्रक्चर जो है पैटर्न का 24 क्वेश्चंस का पेपर होता है, विच इज स्प्लिट इनटू 4 RC passages of 4 questions each and 8 questions of verbal. और verbal ability में वो 4 तरह के questions पूछते हैं specifically. They're asking 4 kinds of questions. एक question होता है para jumble. पैराजम्बल में क्या होता है, 4 या 5 सेंटेंस दिए रहते हैं, ऊपर नीचे किए हुए रहते हैं, तो आपको उसको डिसाइड करना है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। यू हैव टू पुट इन, इट्स अ टीटा क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस, तो आपको उसका सही ऑर्डर डालना होता है। दूसरा होता है पैरा समरी। यू हैव अ पैराग्राफ of around 80 to 150 words, 80 to 120 words normally, और उसके 4 समरीज दिए रहते हैं। तो पैराग्राफ में कोई आइडिया प्रेजेंटेड होगा और उस आइडिया के बेसिस पे 4 समरीज दिए रहते हैं कि यू हैव टू ट्राई टू चूज कि विच ऑफ द समरीज, द समरी माइट बी 10 to 15 words, you have to decide from the 4 options which of the summaries best represents the same idea.
that the author is telling you. That's the second question type. The third question type is what is called as odd man out. Odd man out में क्या होता है कि 5 सेंटेंस दिए रहते हैं, the 5 sentences, जिसमें से 4 of them make a paragraph, and 1 of them does not fit into that paragraph. It is about the same thing. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 सेंटेंस क्रिकेट का बात करेगा और ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो भी क्रिकेट का ही बात करेगा. इट्स बट इट विल नॉट फिट इनटू द पैराग्राफ. वो थोड़ा सा आगे रहेगा या थोड़ा सा पीछे रहेगा उस आइडिया से. तो बीइंग एबल टू स्पॉट दैट which one is that sentence and then marking that as the answer is the odd man out question type. And the fourth question type in verbal is what is called as it's basically fill in the blank, but यहाँ fill in the blank is not one word 2 word substitution. Fill in the blank cat में जो दे रहे हैं लोग वो क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लिए, उसमें 4 ब्लैंक क्रिएट कर दिए, उस पैराग्राफ में से उन्होंने एक सेंटेंस हटा दिया है. सो लेट्स से देयर इज अ पैराग्राफ ऑफ 8 sentences. 8 सेंटेंस का पैराग्राफ है, तो वो व्हाट दे आर डूइंग, इसकी ये सेंटेंस यहां से हटा दिया, बाकी 7 सेंटेंस ऐसे ही छोड़ दिया और इसके बदले एक ब्लैंक क्रिएट कर दिया. बट दे ऑल्सो क्रिएटेड द सेम ब्लैंक हेयर, अनदर ब्लैंक हेयर and a 4th blank here. And then ये वाला sentence जो हटाया उन्होंने, that sentence they'll write here. They'll say कि ये sentence है, इसको सही जगह पे लगाओ. You have to be able to spot it should go here, not here, not here, and not there. Because if you go to these places, it's wrong. So this is the fill in the blank question type. अगर एक थीम देखोगे इसके बारे में, ये पूरा थीम कॉम्प्रिहेंशन का है. वर्बल एबिलिटी रिक्वायर्स मोर कॉम्प्रिहेंशन देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है, वो तो नाम ही है उसका. लेकिन अगर तुमको सीधा सीधा पैराग्राफ समझना नहीं आता है तो उस पैराग्राफ को जंबल करके अगर दूंगा तो समझ में आएगा क्या? So the verbal ability questions, why I told you about these 4 question types, is because they are testing your comprehension, your ability to understand what's written. So when you're preparing for the verbal ability reading comprehension section, it's a high scoring section, mind you, because if you can master it, you can easily score 45-50 in this section. वो इसमें कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, पैराग्राफ पढ़ो, पैसेज पढ़ो, आंसर करो. अटेम्प्ट्स जल्दी होते हैं इसमें, तो 15 से 20 अटेम्प्ट तो सब लोग कर लेते हैं इसमें, बट वेयर इट मैटर्स इज द एक्यूरेसी रेट. So when you start building your blocks for verbal ability and reading comprehension, you have to read. वो तुमको बाहर वाला ऑटो वाला भी बोल देगा. ऑटो वाले से पूछो कि इंग्लिश सुधारना है, क्या करें, कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोलेगा खूब पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदू पढ़ो, सब तुमको वहां मिल जाएगा. यू नॉट कम टू मी फॉर दैट एडवाइस. सो व्हाट इज द क्रक्स? ठीक है, रीडिंग तो करना होगा तुमको. That's of course that's your study session. कि today I'm going to sit for 2 hours and I'm going to read. But for what perspective? What is the key skill required? 2 key skills are required. The first key skill is the ability to understand a sentence. और यहाँ पे of course the sentences are not Ramu goes to school. Right, वो वाले सेंटेंस नहीं रहते हैं. So when you go into you can pick up past cat passages and you can just do one thing, do an activity. एक रैंडम कैट का पैसेज उठा लो, 2018, 19, 20 किसी का भी. एक काम करना, एक पैराग्राफ उठा लेना उसका. वो पैराग्राफ करीब 200 वर्ड का होगा, 150-200 वर्ड का होगा. 4 पैराग्राफ का पैसेज होता है नॉर्मली, 3 से 4 पैराग्राफ का, तो 600 to 800 वर्ड का पैसेज आता है. इस साल थोड़े लंबे आए तो 900,000 के भी आए होंगे शायद. तो एक पैराग्राफ उठा लेना, उसमें मेजर करना कि सेंटेंसेस कितने हैं.
तुमको दिखेगा कि 200 वर्ड का पैराग्राफ है, 5 सेंटेंस है, मतलब फुल स्टॉप 5 ही जगह है, which is a very clear quantitative measure that sentence understanding, sentence comprehension of a 40-word sentence, the average sentence length is 40 words. वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इतने बार चेंज करेगा विद इन अ सेंटेंस, unless you know how to read those, how to break those down, and you practiced it, you will be completely lost. And that's the first problem with comprehension that most people have. वो पैसेज बोल रहा है द कैट इज चेजिंग द माउस, और तुमको दिख रहा है कि द माइस इज चेजिंग द कैट, तो उल्टा ही देख रहे हो, तो nobody can help you. So this skill, the ability to understand sentences, is a key skill in the building up of your this thing, because once you, this is the crux, I told you there are 2 crux skills. The ability to, कोई भी सेंटेंस मेरे को तो मैं समझ सकता हूँ, ये स्किल एक बार आ गया. The second skill है, the second skill is the natural outcome of this. वो स्किल है the ability to understand paragraphs. Paragraph understanding का construction structure is built based on sentence understanding. तो अगर मैं सेंटेंस समझ सकता हूँ तो पैराग्राफ समझ लूंगा, और पैराग्राफ समझ रहा हूँ, पैराग्राफ बिकॉज द पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, और पैराग्राफ समझ रहा हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड 4 पैराग्राफ्स, so I can understand the passage. So when you are trying to start your reading for your cat, you have to, skill wise, you have to learn how to decode an 800,000 word passage. उससे लंबा रीडिंग तुमको एग्जाम के लिए नहीं करना. So, because I'm telling you this because this key question comes, should I start reading books and all? The book reading you can do if you want to have a secondary outcome of that. Secondary outcome क्या? कि जब तुम इंटरव्यू में जाओ, you are able to present yourself that I read so many books. So on your profile, on your biodata, you want to showcase those books. ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी पुअर था, एवरेज था, पुअर नहीं था, एवरेज था, उसका आई कैलकाटा कॉल आ गया, एंड शी हैड नथिंग ऑन द बायोडाटा. सो आई स्टार्टेड आस्किंग हर व्हाट to give me something concrete which I can help you present in the interview. Interview is very strategic decision making, क्या करना है मेरे को, what do I showcase. तो उसने luckily for me and for her, उसने आयन रैंड के बुक्स, वो दो बुक्स जो है फाउंटेन हेड एंड एटलस शक्ट, उनको 8 बार पढ़ा था उसने. बोला खत्म है तुम्हारा, यू विल गेट थ्रू. सीधा इंटरव्यू को वहां ले जाएंगे हम लोग, और आयन रैंड के राइटिंग स्टाइल और उसके कैरेक्टर्स पे डिस्कशन करा देते हैं. शी वॉज अ नॉन इंजीनियर. IIM Calcutta इज अ वेरी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड कॉलेज. 95% लोग 95% लोग इंजीनियर्स जाते हैं वहां पर IIM Calcutta में. She was a non-engineer and she got through based on that. So book reading is only for the exam. The skill you want is 1,000 words. The day you have the ability to read 1,000 words on any topic and understand it, and from the mental idea framework in my mind, that day you are done. You are ready for CAT, because once you learn how to comprehend, I mean it's a two-part structure. The ability to comprehend and the ability to solve. You can't work on this unless this is working. Because जब तक तुमको mice is chasing the cat दिखेगा और पैसेज बोला है कि cat is chasing the mouse, तब तक तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे. Why has the author mentioned this? Which of the following, if false, will contradict the facts or the opinion stated by the author? Author ने बोला है cat is chasing the mouse, तुमको दिख रहा है mice is chasing the cat. You got no chance of answering a question like this. Right? So getting the framework and the crosshairs, as they say in shooting, that ready कि जो idea presented है वो completely मैं ले पाऊँ. Right? And we in our course I teach a technique which I use
which I call para mapping. The ability to map a paragraph's idea. Good readers have this ability, and which is one of the things you'll have to do. The movement to becoming a better reader. And I do take courses. Again, our course is a mix of the physical classes that we have here, and of course the online classes that we have, which even though the people who come to a CP center and do our classes, we tell them to do some of those online sessions, because every time it's not possible to, if I want to just do the CAT course straight off and just limit it to that, वो तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. But अगर हमको extras देने, a course on communication, a course on study techniques, study methods, a course on motivation, personality growth, personality change, ये courses जो अगर हमको put करना है, which I do personally myself, right? A course on reading, improving, becoming a better reader. So these we implement through short modules. कि okay, अगले 2 दिन, next week Wednesday Thursday को मैं 8 से 9 दो दिन ये class ले रहा हूँ. I'm taking a module on this. So you'll get the instructions, then you have to start to follow it. And please remember, for me, it's very important. Most of the classes I will take with you guys will always be about instruction. You have to do this. ऐसे होता है, ऐसे solve किया जाता है question को, ऐसे सही answer आता है. अब ये practice करो तो so that you reach this point. Because broadly, what has to happen? As I told you, verbal में attempts हो जाते हैं. Accuracy rate is the key factor, right? तो मेरा एक वीडियो है YouTube पे, तुम देख भी सकते हो उसको, it's openly available. Last year ZAT का verbal ZAT हुआ था 5th जनवरी को, शायद 3rd या 4th जनवरी को हुआ था. I don't remember exactly which date. First Sunday of January होता है. और ZAT में क्या होता है, वो लोग आंसर जब क्वेश्चन पेपर देते हैं तो उसमें they don't give the answers. They release your response sheet कि आपने ये सब आंसर मार्क किया है, आंसर्स नहीं देते हैं. तो YouTube पे everybody solves the maths and the DI and all, because वो तो 2+2 वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हो. I took up the challenge last year after the ZAT exam, और वो लोग आंसर की 1 हफ्ते बाद रिलीज करते हैं. तो 5 जनवरी को अगर एग्जाम हुआ तो 12 से 14 जनवरी के बीच में आंसर की रिलीज करते हैं. So I had taken this live session on ZAT. That verbal, I took the challenge कि verbal में solve करता हूँ. People were requesting me. 24 question आया था verbal में. So on live YouTube broadcast, I had solved 21 questions. And my net outcome out of 21 questions was 19 correct, 1 wrong, which I later realized was a oversight on my part, which is why it went wrong. And 1 question I had mentioned, this question is ambiguous. वो सेशन लंबा हो गया था while discussing and this thing, तो मैंने बोला था बाकी 3 क्वेश्चन जो बचे हैं उसका मैं सॉल्यूशन चैट में डाल दूंगा. तो I solved those 3 questions also. So out of 24 questions I solved, I did not mark this because I said it's ambiguous for me. I can't see a clear answer. I got 22 correct out of them. Why I'm telling you this is because the key skill is everybody can solve the questions. मतलब attempts हो जाते हैं. The key skill is what is the accuracy. So what happens is the mistake people do in preparation for comprehension especially, and comprehension strong कर लो तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा. ये 16 questions maximum weightage तो comprehension का ही है, और your verbal cannot be strong unless your comprehension is good. तो preparation structure wise एक skill तुमको आना चाहिए, and that's what I tell people. Your first 3 months has to be on this skill. मेरे को, I mean, once your comprehension part is done, solving part के बात मैं कर रहा हूँ कि मेरे को पैसेज दे दो, मेरे को टाइम दे दो, 20 मिनट दे दो, 25 मिनट दे दो, 30 मिनट दे दो, मैं टाइमर मत लगाओ मेरे लिए, मेरे से सही आंसर ले जाओ. बिकॉज जब तक तुम, I mean, the logic is very simple. You learn to do something correctly first before you learn to do it fast. People across the world, I mean, कभी भी मुझे हंसी आती है ये सब गुरुस को देख के. Day 1 पे सिखाते हैं कि 10 मिनट में 8 मिनट में पैसेज कैसे करोगे. अरे भैया, किसी के पास ये स्किल नहीं कि 30 मिनट में ऑल सही कर पाए,
कोई चलना नहीं सीख जानता है तो दौड़ सकता है क्या? Do you learn to walk first or do you learn to run? You learn to walk, and once you learn to walk, learning to run is a natural consequence. Nobody can stop you from learning to run. So the first key point, and most people don't reach this. So go to people who prepared for CAT this year. Ask them this question: did you reach this skill? You could get all 4 out of 4 right. You could solve 16 questions, 4 passes, get 14, 15 correct in unlimited time. So when you focus on the comprehension, you're focusing on sentence comprehension and paragraph comprehension. Sentence comprehension से अपना paragraph comprehension. इसके ये 2 key skills हैं. इसका जो building skills है, sentence comprehension में what are the hurdles? Why does somebody not understand a sentence? क्यों नहीं समझ सकते हो सेंटेंस? कोई सेंटेंस नहीं समझने का क्या रीजन है? एक तो वोकैबुलरी है, ठीक है. रामू गोज टू स्कूल, स्कूल का मतलब ही नहीं पता तो क्या सुनोगे? ठीक है. तो one is the vocabulary part, but vocabulary itself, so vocabulary is the building block to sentence comprehension. But vocabulary itself is not just limited to vocabulary. This is again a mistake we make. Right? Vocabulary has 3 components. I'll give you this through an example again. We all know Hindi. मैं तुमको एक सेंटेंस बताता हूं, वो मेरा कान काटता है. ना कोई अमेरिकन हिंदी सीखा है, कान सीख लिया, काटना सीख लिया. क्या विजुलाइज करेगा इस सेंटेंस से? वो कान काट रहा है, मीनिंग तो कुछ और है इसका. So this is one of the parts of the building block. These are called phrasal verbs and idioms. So every language has a group of phrasal verbs and idioms. English also has them. Which meaning 1, meaning 2. 3 word idiom agar hai, three words ka meaning 1, meaning 2, meaning 3. You add the 3 meanings, it is not the sum of those 3 meanings that what it means. So if you have a lot of problem at this level, then I suggest, there are 2 ways to work on vocabulary. One is active work on vocabulary, the other is passive work on vocabulary. What is the difference? Active vocabulary work is where you actually doing something. आज कुछ words याद करने हैं, कुछ phrasal verbs देखने हैं. Passive होता है कि अपने reading में include कर लो vocabulary को. Reading तो करना ही है, उसमें include कर लो vocabulary को. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा गैप्स हो रहा है, रामू गोज टू स्कूल ही नहीं पता है, तब तो वोकैबुलरी पे एक्टिव वर्क करना पड़ेगा. Otherwise you can, for 90% students I have seen that passive work on vocabulary also does. Whatever you're reading, when you come across new words, keep noting them down in a register. A new word, the first time you read it, you should not, if you don't know it, second time you read it, you might still not recollect. Third, fourth time तुम उस word को read करोगे, तुम्हारा हो जाएगा. वो पैसिव वर्क होता है जहां तुम कोई एग्रेसिव वर्क नहीं कर रहे हो वोकैबुलरी में, बट इट्स हैपनिंग बाय इटसेल्फ बिकॉज ऑफ योर रीडिंग. ऑल यू हैव टू डू इज, जो भी वर्ड तुमको नहीं मिलता, नया मिलता है, उसको तुम अपने रजिस्टर में नोट कर लो. जस्ट नोट द वर्ड, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको डिक्शनरी नहीं बना रहे हो. वर्ड नोट कर लो. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ज्यादा यूज हो रहे हैं नॉर्मल राइटिंग में, वो तुमको ओवर 3 months 6 months ऑफ रीडिंग में 4 बार आ जाएंगे. और 6 महीने रीडिंग में अगर कोई वर्ड एक ही बार आया तुम्हारे पास, उसको तुम भूल भी गए, तो चांसेस कि वो एग्जाम के पैसेज में एक बार आएगा वो काफी कम है, बिकॉज वो काफी रेयर वर्ड है. जो इंपॉर्टेंट वर्ड है 6 महीने की रीडिंग में कम से कम 4 बार आ जाएंगे. तो वो काम कर लो. ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू बिल्ड वोकैबुलरी. वी हैव क्लासेस व्हिच वेयर मीनाक्षी मैम टेक्स बेस्ड ऑन ऑडियो विजुअल एड्स एक्सेट्रा. वो सब कर सकते हो, बट ब्रॉडली दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट. And then this is the comprehension part. In the solving part, you are trying to first focus on what is my time frame. I have to first become a 30-minute solver of a
reading comprehension passage. Take the answer key from me. I'll give you the answer key. Give me 25-30 minutes. I will not take 30 minutes on every passage, but that's my upper limit. 30 मिनट में मेरे को कोई भी क्वेश्चन आरसी पैसेज दो, मेरे से आंसर की ले जाना था. मेरे को आंसर की देने की जरूरत नहीं है. That is the first part of the journey of learning solving. Once you become a 30-minute solver of RC, then you start improving efficiencies. So typically, if you look at the flow chart, I mean, if we divide, we are in December. Let's divide, and this is, I'll close verbal with this, and then we'll move to the other areas, the DILR and the quants. March, June, September, and November. These are four, let's say these are four time markers for the year. So this phase has to be on those two things: the comprehension and the learning to solve 100% correct. So till March, the first 3 months of your 4 months of your preparation has to be built on just these two things. There are specific exercises for it. Right? जैसे comprehension सुधारना है, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए? एक प्रोसेस होता है स्टेप अप प्रोसेस. स्टेप अप प्रोसेस क्या है? मेरे को क्रिकेट बॉल खेलना है. आई एम कंफर्टेबल विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, बट माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्ले 140 किलोमीटर पर आवर, वो भी स्विंगिंग बॉल. तो स्टेप अप होता है कि मैं नेट्स में जाऊं और 85 पे बॉलिंग मशीन को 85 पे लगा दूं और उसको 85 खेलना स्टार्ट करूं. क्या होगा? 10 दिन में मैं 85 से यूज टू हो जाऊंगा. Then I step it up to 90. Then I step it up to 95. And I step up that way 10-15 times. एक पॉइंट आएगा जब 130 कंफर्टेबल है, तो 140 में बॉलिंग मशीन लगाऊंगा, 15 दिन में उसको भी सीख लूंगा. सो कॉम्प्रिहेंशन में भी वैसे ही होता है कि मेरा ये लेवल ऑफ रीडिंग ओके है, सो मैं इसके एक लेवल ऊपर उठाऊं. थिंग्स आर जस्ट अनकंफर्टेबल विद मी, इस पे 15 दिन में एक महीना रीडिंग करूं, एंड देन आई पिक अप द सेकंड वन. इस पे कंफर्टेबल हो जाऊं, देन आई दिस थिंग. सो 5 स्टेप्स में आई रीच द पॉइंट वेयर आई नीड टू बी एबल टू read the kind of stuff that cat gives. That's the step up approach. The other approach is मैं 80 खेलना आता है मेरे को, और मेरे को 150 खेलना है. मेरे पास समय कम है, आई वांट टू क्रैश दिस. 2 साल में तो कर लूंगा मैं. If I go step up, I want to crash this. So what I do is I go tomorrow to the nets and I put the ball at 150 straight. तो क्या होगा? पहले दिन I'll be hurt, खून निकलता रहेगा 10 दिन, लेकिन मैं आई कंटिन्यू दैट. ठीक है, खून निकलने दो, कल फिर जाऊंगा और कल फिर 150 बॉल लगाऊंगा. तो 5-7 दिन बाद बॉल दिखने लगेगा. 15 दिन बाद मैं बॉल को मारने लगूंगा. 1 महीने बाद आई विल स्टार्ट हिटिंग इट फॉर सिक्सेस आल्सो. So adopt both these approaches. One is the step up approach. The second is okay, I straight away pick up the most difficult reading. When I read it today, I don't get more than 10%. Fine. कोई मर्डर थोड़ी हो गया मेरा. कल पढ़ूंगा 12% आएगा. But I'll go back to the nets every day and I'll keep reading those things so that I'll keep increasing my awareness and my ability to understand it. एक point आएगा जब 40% हो जाएगा. And as you start getting more and more of what you read, उसके बाद the last part goes much faster. 40 to 70 will be much faster than 20 to 40. So adopt both these processes. And these are all down to your study sessions. Okay, I'm doing a reading session. I'm picking up a passage from the New York Times. These kind of passages are difficult for me. I'm picking up a passage on a difficult subject, which I don't understand. अगर ये एग्जाम में आ जाता मेरा, तो मैं उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ना चाहता हूँ. That's the basic premise. Intensity has to be there. कोई भी काम में इंटेंसिटी दोगे, it will pay you back. नहीं दोगे, नहीं pay off करेगा. So your focus should be here. If you can reach this point by March, then March to June will be efficiency focus.
कि I need to become a 15-minute solver of a set. एक RC passage 100% आए without losing accuracy. I now want to do it in 15 minutes. यहाँ पहुंच जाओगे जून तक. तो I was showing my students. मैंने एक section test लिया था before the CAT, verbal का, which was a previous year paper, and I had scored in that section. In that test I had scored 57 marks. और मेरा typical रहता है verbal में when I solve all the questions. CAT में भी I solved all the 24 questions. तो मेरा typical रहता है कि I do the RCs in around 27-28 minutes. So, and I've got 12 minutes for the 8 questions of verbals and 16 questions of RC I do in around 27-28 minutes. This is my breakup. So when I was solving that paper, the first passage took me 12 minutes, which is, and since I was solving a paper after almost a year, after 2 years almost. So I was rusty. So I just 4 days before the CAT. तो 12 मिनट लगे मेरे को. तो अब मेरा ट्रैक देख लो, 40 मिनट से स्टार्ट किया हूँ, 28 मिनट्स बचे हैं, 3 पैसेज बचे हुए मेरे. नॉर्मली आई एम डूइंग 4 पैसेज इन 28 मिनट्स. तो 7-7 मिनट का मेरा एक पैसेज होता है. इफ आई गो एट दैट रेट, आई विल डू 2 more. If I do all 3, then I'm not got no time for my verbal. So and I showed this on our test center to my students that my next passage was 4.5 minutes with all correct. So that's the ability you build. You have to have that ability. ये तभी मैं कर पाया जब वो ability था. नहीं तो तुम किसी रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ी तेज चलाने का टाइम आया कि तेज चलाने जल्दी पहुंचना है और तुमको तेज चलाना आते नहीं, तुम एक्सीडेंट कर दोगे. सो एबिलिटी बिल्ड करना पड़ेगा. वो ऐसे बिल्ड, वो तभी बिल्ड होगा जब ये पार्ट. ये कैसे जाएगा? So the way it happens is you by June, if you can become a 15-minute solver of a set, तो June to September तुम्हारा जो focus होगा will become how do I become a 7-8 minute solver, and in need I should be able to do something in 5 minutes also. अगर passage मेरा easy आ गया किसी तरह का, slightly easier for me, I should have that 7th year solving, right? One of the mistakes people make is timeline के context में. The mistakes people make in preparation, which I want you to avoid because you're starting early, is they back end the preparation. यहाँ पे बहुत सारा काम बचा हुआ रहता है उनका. तब वो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम लोग को यूट्यूब पे भी और स्टूडेंट से भी, कौन सा चैप्टर छोड़ दूं मैथ्स में. तो टू पीपल हु आर स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट कैट 24 in December, I tell them that be ready in June. Put that as a benchmark. June में I'm ready. Don't expand your time to November. This is one of the key mistakes we made in throughout our schooling. The difference between me and the toppers, later I realized when they became friends of mine, कि मार्च में एग्जाम होता था, फाइनली बोर्ड एग्जाम एक्सेट्रा, मैं फरवरी में पोर्शन करता रहता था. इन लोग का नवंबर में पोर्शन हो जाता था और लास्ट 3 महीने सिर्फ टेस्ट देते थे वो लोग. तो ऐसा कोई इंटेलिजेंसी का डिफरेंशियल नहीं था. इट्स जस्ट द थoroughness एंड द प्लानिंग. So your plan has to be okay, I'm ready in June with the basic work that I have to do. So coming to the next section, which is the data interpretation logical reasoning section. Now, this is 2 subjects, but the way the two subjects are built is data interpretation is interpretation of data. So you start building the subject. Logical reasoning is the ability to solve puzzles and different various kinds of reasoning questions, which can be described as reasoning. So you start building this skill. CAT में क्या होता है? When you enter the exam and you start solving a question, तुमसे अगर कोई पूछेगा कि DI कर रहे थे कि LR कर रहे थे, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या किए थे. क्वेश्चन DI था कि LR था, वही समझ में नहीं आएगा.
तो होता क्या है कि when this skill keeps going up, कैट में लास्ट में जो पजल्स पूछ रहे हैं, इट्स अ मर्जर ऑफ दीज टू स्किल्स. इसमें जो रिक्वायरमेंट है टू गेट द क्वेश्चन थ्रू, और बहुत सिंपल है यहाँ पे. एज आई टोल्ड यू, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एक है फास्ट करना, दूसरा है कर लेना, दूसरे से नहीं होता है. आजकल जो DILR आ रहा है उसमें वो सेकंड स्किल ही क्रिटिकल है. वो तो तुमको ऐसा फंसा देगा सिचुएशन में, इतने सारे पॉसिबिलिटीज दिख रहे होंगे कि तुम मैनेज ही नहीं कर पाओगे. सो द मोमेंट यू कैन बिल्ड दैट पॉइंट, क्योंकि नो मैटर हाउ मच ट्विस्टेड यू गिव मी द सेट, आई कैन डू इट. सो उस पॉइंट पे क्या होता है, व्हेन यू सॉल्विंग दो सेट्स, उसमें जो जो फंसते हो, उसमें से निकलने के लिए एक स्किल तुम यहाँ पढ़े थे, यहाँ सीखे थे, दूसरा स्किल यहाँ सीखे थे. इट बिकम्स अ मर्जर. So preparation structure wise, and one key difference, the DILR story till 22 versus 23. I typically rate a DILR question based on what kind of time frame do people like me would take to solve that set. And that's one of the reasons I take the exam. Because then when a student tells me कि easy set था, tough set था, मुझे समझ में नहीं आता है कितना easy कितना tough. When I see a set and I try to solve it, मुझे उसका complexity समझ में आता है, then I can make out whether it was for me it was an 8-minute set or an 11-minute set or a 15-minute set or a 17-18-minute set. So DILR story till 22 was one set of this, two sets of this, and one set of this range. So there was always a pressure release set available, जिसमें the uncertainties were not so much. Uncertainties कैसे create किए जाते हैं DILR में? Suppose I tell you, एक data interpretation logical reasoning is about variables, numbers, कुछ numbers के खेल रहेगा. तो दो numbers मैंने introduce कर दिया, salary of A and salary of B, right? And I said that sum of this is 10, whatever, 10 lakhs. ठीक है. Now if I am a सीधा साधा question setter, I'll give you one more equation. एक और इक्वेशन दे दूंगा मैं ताकि तुम ए और बी निकाल लो. लेकिन ये जो घुमे वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं आजकल, उसमें इसी पे छोड़ देंगे और इसमें सी का इंट्रोड्यूस कर देंगे. सी का सैलरी या तो 3 था या 4 था या 5 था. अब तुम सोच रहे हो कि ए का कितना था, बोल देंगे इतना, बता देंगे इंटीजर्स है दोनों. तो तुम सोच रहे हो अच्छा 9 और 1 हो सकता है, 8 और 2 हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है. ये करते करते 1 और 9 हो सकता है. 9 पॉसिबिलिटी यहाँ मिल रहे हैं और 3 पॉसिबिलिटी यहाँ है. 27 पॉसिबिलिटी से खेल रहे हो तुम. और एक रास्ता देंगे तुमको फाइनल निकालने का कि कौन सा वाला था. वो रास्ता इतना छुपा रहेगा, you will not be able to see it in 8, 10, 12 minutes. So DILR में when you preparing, the ability that I can get through a set, इतना tough set भी होगा तो I can get through. So what happened, and this was the story till 22. 23 में क्या हुआ? 2 sets of this, 1 set of this, maybe 2 sets of this. There is no set here. So what happened to most people, इस सेट में घुसे फंस गए. और ये चैलेंज तुम लोग भी फेस करोगे. सेट स्टार्ट किया, स्टार्ट में पहला 3 मिनट तक दिल की धड़कन भी शांत है, लेकिन एज टाइम पासेस यू कीप गेटिंग सक्ड इनटू द सेट, और 10 मिनट निकल गए एंड यू गॉट नो कंट्रोल ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. 15 नंबर का खेल है. वो 15 नंबर क्या है, उसमें से 7-8 के बारे में दे दिया, बाकी 6-7 घूम रहे हैं हवा में. ABC का जो मैंने कहानी बताया. So you got no control on those remaining 7 numbers. They start asking you questions. ये नंबर का वैल्यू बताओ. ठीक है, उसमें आंसर्स इस तरह के होते हैं.
मैं तुमको पूछूं बी का सैलरी बताओ, एग्जैक्टली 8, 7 और 8, 6 और 7 और 8, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा कि फाइनल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि ऐसे ही छोड़ दे रहा है वो. And the only way you can deduce is through by using the clues he is given. So this is going to be a story. So ये position में तुम पहुंचने वाले हो एग्जाम में. Next year, if next year CAT is an important day for you, I'm going to tell you that this is going to happen to you. 10-12 मिनट निकल जाएंगे, एक पॉइंट आएगा कि सेट दिस आइदर मेक और ब्रेक, कि नेक्स्ट 5 मिनट्स में अगर तुम आंसर्स तक पहुंच जाओ, you are differentiating your score. Delta on your score is 15 marks. 5 questions into 3, because सेट जब सॉल्व होता है तो पूरा क्वेश्चन आ जाता है. और यहाँ फंस गए और नहीं निकल पाए, तो अभिमन्यु वाले कहानी, घुसा देंगे तुमको अंदर, उसके बाद निकलना आता है तो निकाल लो एंड टेक द रिवॉर्ड. So you're going to face this situation, and during your year you have to challenge yourself in every study session, every practice session, every session that you work on. And this challenge will be through, maybe as I told you, you prepare your DI separately, you prepare LR separately, and then towards the end you merge both of them. So the challenge will be to, I mean, for December starting students, I'll tell you, it's going to be about 400 sets of solving. This is going to be the process. 400 सेट DI का, 400 सेट LR का. This has to be the challenge. Okay, the day you've done this much, you've seen all kinds of difficulties that have been created inside the exam. जैसे किस तरह का डिफिकल्टी क्रिएट होता है, मैं तुमको इस साल के कैट का बताता हूँ. एक क्वेश्चन था सेकंड स्लॉट में, उसमें 9 बॉक्सेस थे, हर बॉक्स में 3 सैक्स थे. So there are a total of 27 sacks, and every sack had a number of marbles inside or something like coins inside it. And the questions were how many sacks have nine, and every sack has between 1 to 9 coins. Questions इस तरह के थे, ये 27. So basically you're dealing with 27 numbers. So in 27 numbers का पूरा खेल है. And they've given you clues to deduce each of those numbers. And some numbers are left की, इसमें 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. So you had to play your game or deduce the clues to the point where you can completely have clarity about these 27. Maths में क्वेश्चन में क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है. ए का सैलरी से बी का सैलरी 25% ज्यादा है, बी के सैलरी से सी का सैलरी 30% कम है. 3-4 नंबर के बारे में खेल होता है, क्वेश्चन होता है. यहाँ पे 27 नंबर का गेम है, कंट्रोलिंग दोस 27 numbers. So these kind of challenges you're going to face, right? और बेसिक डिडक्शन तुम्हारे 5-6-7 मिनट में हो जाएंगे. और होता क्या है, डी और एल आर में 2 तरह के सेट्स आते हैं अगेन, और क्वांट्स में भी. दिस इज ऑल द सॉल्विंग एरिया. There are 2 kinds of questions. One kind of question in quants and DILR also is questions that are predominantly solved by obeying instructions. जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसको ओबे कर लो, सॉल्व हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन होता है, the second kind of question is the second. So obeying instructions का opposite क्या है inside a solving question? Obeying instruction का opposite होता है self generated thought. Where you have to generate the thought from inside yourself, from the situation, by reading the situation. उसमें next step क्या करना है. अब जैसे I'll give you a small example of obeying instruction. Obeying instruction में ये है कि the average
of a family of average age of a family of 5 members is 30. ठीक है? One person dies at age 60 and a new child is born in the same time. अब इसको इंस्ट्रक्शन ओबे करना है. द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 30. ये इंस्ट्रक्शन तुमको 150 बता रहा है कि टोटल एज 150 है, राइट? देन दे से कि one person dies at the age of 60 and a new child is born. So 60 का एज का मर गया आदमी तो 90 हो गया ये, और 5 ही लोग बच गए बिकॉज एक चाइल्ड भी आ गया है. तो 5 पीपल का टोटल एज 90 हो गया. 3 years later, ये कैटेगरी क्वेश्चन है. 3 years later, so reaction now, the moment they say this, 5 लोग हैं, टोटल एज 90 है, 3 साल बाद, तो 3 साल अगर बढ़ जाएगा तो पांचों का 3 साल बढ़ जाएगा. तो जो एज का वेरिएबल तुम टोटल एज का वेरिएबल को के साथ प्ले कर रहे हो, योर रिएक्शन इज 3 years later. ठीक है? 3 years later, so total 105 हो गया. A 30-year-old man dies and a new child is born. Question एक फिर 3 साल बाद एक और इवेंट दे दिया, and then they ask you what is the average age of the family after that. So इसमें अगर देखोगे, there's no self-thought. You're just obeying instructions, you're getting to the answers. ठीक है? And then the opposite of this is, so obviously, these two kinds of questions, obeying instruction questions and questions with self-generated thought. This is, when I'm talking about this, I'm talking quants as well as DILR. DILR में भी कुछ steps obeying instructions होता है. So how difficult a question is determined by the ratio of these two. In quants, if it's a 4-step question, normally quants का 3 or 4-step question होता है. If 1 step is obeying instruction, 2 steps, 3 steps are self-generated thought. It's a tough question. A question which has all 4 steps obeying instructions is an easy question. जिसमें 2-2 है, वो बीच का क्वेश्चन है. डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में DILR 10 से 12 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं. तो सेट that is 8 to 9 questions, 8 to 9 steps of obeying instructions, 2 steps of self-generated thought. Self-generated thought के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि you might miss it completely. कुछ प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो किसी पॉइंट पे और एक तुमको चेंज करना है उसमें, या एक ट्रैक चेंज करना है, तुम वो ट्रैक ही मिस कर गए, तुमको दिखा ही नहीं. अंडर प्रेशर और मिस करने का चांसेस होता है. तो जब सॉल्विंग एरियाज की तैयारी कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स प्रैक्टिस. अगेन द रिक्शा विल टेल यू कि प्रैक्टिस करो, बट व्हाट आई मीन, सो बेसिकली इट्स दिस. एंड द डिफरेंशियल इस साल का कैट में क्या था, DILR ऑल्सो. क्वांट्स का तो बहुत हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट था, बट इवन द DILR, I mean, I could see a lot of sets, even though there were 10-12 minute sets last year. A lot of them 8-9 steps obeying instructions, 2 steps of self-thought. इस साल के पेपर में जो सेट्स थे, उसमें स्पेशली दो 17 minute sets, उसमें 6-7 steps of self-thought, 4 steps of obeying instructions. And you're dealing with 27 numbers. You're completely lost. Your mind is like a jelly bean. That's what happens. And it is going to do that to you. And I'm not unhappy about it. And I shouldn't, if I'm a student, I should not be unhappy about it. Because मेरे को सिर्फ इतना ही सीखना है कैसे करना है उसको. कुछ तो रास्ता होगा. और मैं सीख लूंगा तो I have got differential. If I'm prepared, I'm looking for a difficult paper, because that's where my differential will come.
बहुत इजी पेपर है तो सब लोग कर सकते हैं, तो मेरे को डिफरेंशियल क्रिएट दिखाना है अपना, तो मेरे को डिफिकल्ट पेपर चाहिए। तो टाइमलाइन वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिक है। एक गलती और करते हैं लोग प्रिपरेशन में, व्हाट दे डू इज कि पहले क्वांट्स और वर्बल स्टार्ट कर देते हैं और डीएलआर को पीछे छोड़ देते हैं बैक बर्नर पे। So please remember one thing. Inside in November next year, you're going to have 40 minutes of verbal, 40 minutes of DILR, and 40 minutes of quants. If your verbal cycle of preparation is 50 weeks, every week during the 50 weeks from now, you have prepared for verbal, it will pay you off here if you've done your job with intensity. If your quant cycle is 50 weeks, it will pay you off here. If your DI cycle is 30 weeks, ये 40 मिनट्स में ये काम नहीं करने वाला है और ये काम नहीं करने वाला है, तो DI साइकिल को अगर DILR साइकिल को 30 वीक्स कर दोगे या ऑफ ऑन करोगे, वर्बल में कंसिस्टेंट थे, क्वांट्स में कंसिस्टेंट थे, तो कैट प्रिपरेशन तुमको लग रहा है कंसिस्टेंट है, लेकिन एक सेक्शन को तुम ऑफ ऑन कर रहे हो। 90% स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक. So have a 50-week cycle of DILR preparation also. And in that context, what you should do, again, let's break it down. March, June, September, and November. When I'm talking about long-term 50-week preparation, if I need to do anything about learning how to solve a question type or some crisis work, तो यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं तो क्राइसिस ही बोला जाएगा उसको. If I had to give you advice, my focus should be that June should be your endpoint. And for June to be your endpoint, learning how to solve something has to be done by March. Because this March to June, April, May, June is the efficiency period. I told you the same thing in RC also. And verbal also. Become a 30-minute solver of an RC passage here. कि 30 मिनट में मेरे से आंसर की ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तुम एफिशिएंसी इंप्रूव करोगे, 15 मिनट में आप कर सकता हूँ उसको. और फिर यहाँ दिस पीरियड इज द टेस्टिंग पीरियड एंड लिटिल बिट ऑफ फाइन ट्यूनिंग पीरियड. और तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि बाय सितंबर you should be scoring 100 plus marks. That should be your target. Because again, कोई भी नंबर है तुम्हारे पास, तुम 60 नंबर ला सकते हो, 100 क्यों नहीं ला सकते हो? 10-12 क्वेश्चन और करने हैं ना. 8 क्वेश्चन कर सकते हो तो 11 क्यों नहीं कर सकते हो? 11 कर सकते हो तो 15 क्यों नहीं कर सकते? क्या करना हो? क्वेश्चन सामने आएगा, रिएक्ट करके आंसर निकालना है. वन ऑफ द 4 आंसर्स विल बी राइट if it's an option based question, or there'll be a value that will be coming out in the answer. You have to build a skill to do it. The differential is the Nainital versus the Paris oral test. Why will you not do it? Why will you not give it your best shot? There's no excuse. There's no reason. There's absolutely no reason. So build this structure. So if let's say we define a target of 400 sets, and when you are solving, दो part होता है solving का learning का. One is assisted problem solving, where you're problem solving with assistance, and the other part, there are 2 tools basically. DILR सीखने का 2 tools होता है, assisted problem solving and self problem solving. Right? So if we define 100 sets of assisted and 300 sets of self, so let's try to say, okay, what is a comfortable number?
How much can I practically achieve by March? March is 4 months. 4 months is around 18 weeks. ठीक है, तो 18 weeks में अगर मेरे को 400 करना है, I need to do around 20 to 25 sets of DI and 20 to 25 sets of LR every week. ठीक है, 400 अगर थोड़ा एग्रेसिव टारगेट, इसको 300 अगर कर लेते हैं, 250 से 300 each, because 25 I don't want you to do now. The pace I want you to do is 15 sets per week of DI and 15 sets per week of LR. जब तक एग्जाम में पहुंचोगे तो 10, 12, 15 मिनट में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा एक DI LR सेट. अभी इनिशियली सीख रहे हो, लेकिन कुछ सेट्स इजी भी रहेंगे. एवरेज टाइम तुम्हारा मान लो 20 मिनट है. 20 मिनट में सेट सॉल्व नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बाद में आना वापस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई विल कम टू दैट. तो 15 सेट में 300 मिनट लगेंगे तुमको. अपर लिमिट 5 घंटे का काम है DI का, 5 घंटे LR का. तो तुम इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो तो दिस मार्च कैन बी अप्रैल फॉर यू, बट नॉट बियॉन्ड दैट. So complete this part of the work, 300 plus sets of DI, 300 plus sets of LR by April. And then the work you'll do will be for efficiency. ठीक है? How do I now learn to be more faster with my solving? How do I improve my efficiency? How do I improve my exactness of my solving? How do I remove the errors I'm making? 90% of the competition is going to be doing this part here. So if you can achieve this, you've got a huge advantage over your competition. That's what we are looking for. I told you, मेरा तो premise ही ये होता है कि अगर किसी competitive exam के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को unfair competitive advantage चाहिए exam के अंदर. मेरा preparation ऐसा होना चाहिए कि I get that competitive advantage inside the exam. So my ability to solve a RC passage in 5 minutes when I want it, it's a competitive advantage, an unfair competitive advantage, because nobody else has that ability. I can maintain my accuracy and still do a passage in 5 minutes. So if I fall into time trouble, I'm out of it. I can come out of it. I know others can't. Right? So this is what the DILR process is. And as I said, एक चीज और है, ये quants में भी important है ये part. When you pick up your, let's say 300 sets for self problem solving, दो पार्ट होता है, assisted problem solving and self problem solving. What is assisted problem solving? एक पॉपकॉर्न का डब्बा ले लो, पॉपकॉर्न खाते रहो और किसी का वीडियो सॉल्यूशन देख लो. नो. Assisted problem solving means you look at what the set the teacher is solving. First try it on your own. तुमसे हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो. फिर जाके घर पे एक बार देख लिया तुमने, ट्राई कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन देखो और देखो तुम्हारे थिंकिंग और जो तुमसे सुपीरियर सॉल्व कर रहा था उसके थिंकिंग में डिफरेंशियल क्या है. एंड हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे. So then you will actually grasp it. So essentially this 300 can be split into 100 of assisted and 300 of self. हम लोग कोर्स में हम लोग 300-400 सेट तो असिस्टेड ही देते हैं, DI का प्लस LR का. मेरे खुद के 100 हैं DI LR में, where I've solved 100 plus sets in DI and 100 plus sets in LR. So what happens when once you start doing this, let's say your preparation cycle is for the first 50 odd sets, you do 30 assisted and you try 20 self. जब तुम कोई नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए कंप्लीटली, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, तुम सॉल्व करने जाओगे तो हर चीज सॉल्व नहीं होगा तुमसे. देयर विल बी अ सॉल्विंग रेशियो, एंड दिस विल हैपन इन क्वांट्स आल्सो. क्वांट्स में क्या होता है कि देयर इज थियरी, there is assisted problem solving, and there is self problem solving. There are three tools. When you want to improve your ability at a chapter, there are 3 tools you have. You can study theory. मेरे को टाइम स्पीड डिस्टेंस सुधारना है, क्या कर सकता हूँ मैं थियरी पढ़ सकता हूँ या जो बुक फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में देख सकता हूँ. मैं असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग देख सकता हूँ. टीचर सॉल्विंग 20 क्वेश्चंस फॉर मी, आई एम लुकिंग एट दोस क्वेश्चंस एंड लर्निंग फ्रॉम देम कि ऐसा करना होता है.
या मैं सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. So if I do these two and then I go to a 250 question exercise for self problem solving, I'll not be able to solve all of them. Because if I'm able to solve all of them, it means that I'm ready. If I'm not ready, I'll not be able to solve all questions. So what will happen? There'll be a ratio. कुछ question होंगे, कुछ नहीं होंगे. So during this, especially during this March and June, and quants mein basically it's 20 chapters. I'll come to how the exam was, but they're basically 20 chapters. And the pace you need is 1 chapter per week for the first coverage of the chapters. और एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. आई हैव गॉट सम पीपल जिनको क्वांट्स में 0 आता था, नेगेटिव मार्क्स आते थे. आई हैव गॉट देम टू कॉम्पीट विद आईआईटीएंस इन देयर एग्जाम्स बाय द टाइम दे टुक द एग्जाम. द सिंपल स्ट्रैटेजी इन क्वांट्स इज you plan minimum 3 rounds of every chapter. हर चैप्टर पे तुम 3 बार जाओगे. So the first round is 1 chapter per week. And जब तुम 1 chapter per week कर रहे हो, उसमें कर क्या रहे हो? उसमें theory देख रहे हो, कर रहे हो, assisted problem solving कर रहे हो जो क्लास में हो रहा है. And then when you come to the self problem solving, let's say you pick up 250 questions, there'll be a ratio of what you can solve, what you can't solve. इस 250 क्वेश्चंस के लिए अपर टाइम लिमिट रख लो 10 मिनट्स. कोई क्वेश्चन 10 मिनट्स में नहीं होगा तो छोड़ देंगे. इट मींस आई एम नॉट रेडी फॉर इट, आई एम नॉट गुड इनफ टू डू इट, ताकि अनलिमिटेड टाइम नहीं हो जाए. सो लेट्स से यू हैव अ सॉल्विंग रेशियो ऑफ 50%. तुमसे 125 क्वेश्चन हो गए और 125 नहीं हुए. व्हाट यू डू is you keep going chapters, 1 chapter a week. जब 7-8 चैप्टर हो जाते हैं, typically quants में the syllabus is arithmetic. और एक key differential इस साल था कि there were no chapters which were not important. बहुत लोग number system छोड़ के गए थे और number system पे questions आ गए थे इस साल काफी. And they were obeying instruction questions. At least 2 questions I saw in my slot which was just obeying instructions. But people who have not studied it will not get it. So quants basically 5 blocks है. Arithmetic, number systems, algebra, geometry, and modern maths. इसमें 8 chapters हैं. Average, mixtures, and allegation, percentage, ratio, proportion, profit loss, time and work, time speed, distance, and interest. इसमें 2 chapters हैं, number systems of progressions. इसमें 4 chapters हैं, functions, inequalities, logs and equations. 4 chapter हैं. यहाँ पे 3 chapter हैं, geometry, mensuration and coordinate geometry. और यहाँ पे 3 chapter हैं, permutation, combination, probability and set theory. This is the breakup. So what happens? This is at qualifying level. If your level is here, when you go through 1 round and you're able to solve, let's say 125 questions, not able to solve 125 questions, there is definitely some growth in your ability. वहां नहीं रह सकते तुम उसके बाद. ठीक है? तो जो स्टूडेंट यहाँ पे है वो उसके बाद उसका निकल जाएगा. He's gone above requirement. बट इसको किसी थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हम लोग. So this student has now reached this point. So let's say there are 4 students A, B, C, D. A प्रिपेयर करता है, B पे पहुंचता है, B प्रिपेयर करता है, C पे पहुंचता है, C प्रिपेयर करता है, एक राउंड D पे पहुंचता है, D एक राउंड प्रिपेयर करता है, क्वालिफाइंग लेवल पहुंच जाता है. तो A राउंड 1 करता है, वो यहीं पहुंचता है. B राउंड 1 करता है, वो यहाँ पहुंचता है. तो A जब राउंड 2 करेगा तब वो B से C पे पहुंचेगा. A will reach this point only after round 2. And the pressure to learn everything is also gone. When you know that I'm going to come back to this chapter 3 times minimum, the pressure to learn everything is also gone.
और होता क्या है, फर्स्ट इन एनी चैप्टर यू लर्न द ओबेइंग इंस्ट्रक्शंस. तो जब तक तुमको ओबेइंग इंस्ट्रक्शन नहीं पता है तुम बहुत वीक हो उस चैप्टर में. ओबेइंग इंस्ट्रक्शंस ऐसा लिखा होता है तो ये करते हैं. तो ओबेइंग इंस्ट्रक्शन जब तुम्हारा क्लियर हो जाता है उसके बाद ही सेल्फ जनरेटेड थॉट सीख सकते हो तुम सोचोगे कि एक राउंड पढ़ूंगा मैं और ओबेइंग इंस्ट्रक्शन भी सीख लूंगा और सेल्फ जनरेटेड थॉट भी सीख लूंगा, होगा नहीं. बिकॉज यू हैव टू राइपन अप योर माइंड टू बी एबल टू टेक दिस इन. मैं तुमको समझा भी दूंगा तुम नहीं समझ पाओगे, करना तो दूर की बात है. So in every topic, every chapter, you first focus on the core obeying instructions part. इसमें ऐसा लिखा होता है. फंक्शंस में अगर क्वेश्चन होता है कि ये 3 लाइन y is equal to 0, x is equal to 5 and x plus y is equal to 3 and x minus y is equal to 1, ये 4 लाइन के बीच में एनक्लोज एरिया बताओ. तो ये ओबेइंग इंस्ट्रक्शन रिएक्शन है कि एरिया एनक्लोज जब पूछता है किसी भी लाइंस के बीच में तो वो कोई ना कोई बॉक्स बनता है. वो बॉक्स जब बनता है तभी तुम एरिया एनक्लोज निकाल सकते हो. तो यू हैव टू बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्ट्रक्चर कि ओके x plus y equals 3 कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइन से, एक्सेट्रा. सो दैट पार्ट बिकम सेल्फ जनरेटेड थॉट देयर. सो एवरी टॉपिक में व्हाट हैपेंस, एक और तरह से देखो. आई मीन लेट्स से देयर आर 3 स्टूडेंट्स x y z. Z is the 100 percentiler. X is the 95 to 98 percentiler, so he's also decent. And X is the 50 percentiler. तो मैथ्स में क्या होता है, एंड इवन DILR क्वेश्चंस के अंदर ट्रिगर्स होते हैं. क्वेश्चन टेल्स यू व्हाट टू डू एंड द डिफरेंस बिटवीन Z and X and Y is that Z knows how to listen to the question. X and Y knows to some extent, X does not know it at all. And when you want to listen to a question, what happens? Every chapter has certain standard things that have to be done. ठीक है, जैसे for example, if I tell you in time speed distance, a man is going up a moving escalator which is moving at 20 steps per second. He's walking up a moving escalator at 20 steps. इससे क्या इक्वेशन बनता है, क्या स्ट्रक्चर थॉट लगाना है, वो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसका. Z को सब पता है, Y को भी काफी पता है, X को कुछ नहीं पता है. X is blank. So every chapter has a set of triggers and reactions. And these triggers and reactions can be broken into obeying instructions triggers and self-generated thought wale triggers. Take मतलब nobody can count this number, but suppose कोई चैप्टर है जिसमें 60 obeying instructions है, 40 self-generated thought है. So what is the difference between X, Y and Z? Z को सब पता है, he knows all of them, and they are deep embedded inside it. Y के पास क्या है? Y has 50 of those obeying instructions. Maybe he's got all 60 obeying instructions, but self-generated thought उसके BC हैं, वो भी top of mind में एकदम deep नहीं गए. X के पास क्या है कि X के पास सिर्फ 20 obeying instructions हैं, 10 self-generated thought हैं, बाकी सब बाहर है. तो जब X एक राउंड करेगा तो X जब एक राउंड करेगा तो क्या होगा उसके बाद? ये स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, इसमें से कुछ और डाउनलोड हो जाएंगे उसके दिमाग में, ये वाले नीचे चले जाएंगे. Z का कहानी क्या है? व्हाट इज Z's ब्रेन? Z के पास all 60 are there and all 40 are there. That's why he's the 100 percentiler. उसको 22 क्वेश्चन दे दो, 20 कर लेगा. और वो सब डीप है, डीपली एम्बेडेड है, सब 2+2 रिएक्शन है उसके लिए. तो एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक रिएक्शन यहां से आ रहा है, एक रिएक्शन यहां से आ रहा है और एक रिएक्शन यहां का है, ये नहीं कर पाएगा. एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रिएक्शन इसके, एक रिएक्शन इसका, ये कर लेगा शायद. लेकिन अगर 2 रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये और एक रिएक्शन यहाँ का है, तो इससे भी नहीं होगा.
ये कर लेगा, इसके लिए 2+2 होगा सब कुछ। तो प्रोसेस ये है, अपने माइंड को एनरिच करना क्वांटिटेटिवली का प्रोसेस ये है। तुम जब एक राउंड करोगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम 100 सवाल सॉल्व करो तो तुम्हारा माइंड का ग्रोथ नहीं होगा, तुम कुछ रिएक्शंस और ट्रिगर्स नहीं सीखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाट विल हैपन इज दिस विल ऑगमेंट, ये 40 हो जाएगा। तुम अगर एक्सपेक्ट करोगे कि एक राउंड करूंगा और ये पूरे 100 के 100 अंदर आ जाएंगे, तो माइंड इज नॉट रिसेप्टिव इनफ टू लर्न, बिकॉज सम ऑफ दीज थॉट्स आर सो कॉम्प्लेक्स। 2+2 वाले रिएक्शन नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सो दे आर सो कॉम्प्लेक्स, योर माइंड इज नॉट गॉट द कैपेसिटी टू लर्न इट। इसके जो लास्ट 10, इसके 30 तो नॉर्मल है, बाकी 10 वाले बहुत ट्विस्टेड है। वो लास्ट 10 तभी आएंगे जब 90 तुम्हारे अंदर है। Which is are the multiple rounds is the safest way to prepare for comps. So if you take the timeline and this year's paper in quant, especially as you must have heard, has gone completely off the boil, completely LOD3. मैंने जब बुक लिखा था 2002-3 में, तो सब लोग मेरे को गाली देते थे कि LOD3 तो बेकार है, आता ही नहीं है। अब देखो कैट कहाँ पहुंच गया। Half the questions were LOD3 this year. And it's to be built. You have to build your ability to get to the LOD3 questions. So the timeline process will be March, April, 20 weeks का timeline fit कर दो। 20 weeks में round 1 हो जाना चाहिए पूरा। And first, maybe you can add 4 weeks to it if you want. Round 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए 20 to 24 वीक्स में। बीच में एग्जाम आ रहा है, कुछ आ रहा है एक्सेट्रा, तो 4 हफ्ता एक्स्ट्रा कर दो। और फर्स्ट 8 वीक्स अरिथमेटिक, राउंड 1। नेक्स्ट 5 वीक्स, नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स नंबर सिस्टम, राउंड 1, नंबर सिस्टम एंड प्रोग्रेशंस। And during these 4-5 weeks, round 2 of arithmetic. ठीक है, इसमें मेरे को उतना कंसर्न नहीं है। अप्रैल का मे भी हो गया तो चलेगा, 24 का 28 वीक्स भी कर लो चलेगा। बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टू डू इट सॉलिड। मेरे को वो एक मूवी थी अमर अकबर एंथनी, वो याद है, देखा है आप लोगों ने? उसमें एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना लड़ते हैं। तो विनोद खन्ना, वो याद है सीन वो? हाँ हाँ, तो विनोद खन्ना उसको खूब पीटता है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, विनोद खन्ना इज द पुलिस मैन, वो ओरिजिनल सलमान खान था, तो शर्ट वर्ट खोल के वो गंजी में आ जाता है। ठीक है, उसको मारने लगता है अमिताभ बच्चन को, तो खूब पीटता है उसको। उसको उसमें डाल देता है, हवाले में, हवालात में। तो अमिताभ बच्चन उसको बोलता है, सर एक बार इधर आइए। वो बोलता है कि क्या बात है। विनोद खन्ना एकदम मार्टिनेट टाइप है वहां पे, उससे क्या बात है, गुस्से वाला दिखा है उसको। बोलता है कि सर आज आज तक जितना आपने मारा है, आज तक मेरे को किसी ने नहीं मारा है, लेकिन मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे, मैंने भी एक मारा था, सॉलिड था कि नहीं? ठीक है, ये सॉलिड वाला जो मारना है ना, दैट्स क्रिटिकल फॉर यू। टेक अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, बट जो काम कर रहे हो सॉलिड करो। तो क्या होगा, राउंड 2 में ऑटोमेटिकली तुम देखो जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुए, अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। One is, let's say you had a very bad solving ratio, 30% solving ratio. Out of 250 questions, you only solved 75, and you could not solve 175. So when you go to round 2, you will see that a lot of these 175 will get solved. Reason is because when you're doing this for the first time, your solving skills were here. कोई भी आदमी 75 क्वेश्चन खुद से जब सॉल्व करेगा किसी भी चैप्टर का, उसका सॉल्विंग स्किल्स वहां नहीं रह सकता है। ग्रोथ आना जरूरी है, पक्का है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो तुम अगर 70% नहीं भी सॉल्व कर पाए तो भी इट्स ओके, यू कैन स्टिल गेट थ्रू कैट।
take it on the chin, and come back to it. Because next time you are here, you're no longer the same person. मेरे को स्टूडेंट्स हमेशा पिंग करते हैं, मैसेज करते हैं, सर मेरे से LOD3 एकदम नहीं हो रहा है. तो मेरा इमीडिएट क्वेश्चन होता है, कितने क्वेश्चन ट्राई किए? सर सब 50 देख लिए. बोले एक भी नहीं हुआ. आई नेवर गॉट अ 0 आंसर. नहीं सर 10 हुए थे. ऐसे 20% विन रेट है. फिर से जाओ वापस करो, 15 दिन बाद फिर से करके देखो, 20-25 होने लगेंगे. बिकॉज 10 जो किए हो उसके लर्निंग को सेटल करने दो, फिर वापस जाओ उस पर, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा. दैट्स वन रीजन. सेकेंड रीजन क्या होता है वाई सेकेंड राउंड में तुमको और सॉल्व होगा, इज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्रॉस चैप्टर क्वेश्चंस. तुम एवरेज का चैप्टर क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा. तुमने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा नहीं है, स्कूल का याद होगा थोड़ा बहुत. जब सब चैप्टर्स करके वापस जाओगे तो यू विल सी दैट वो क्वेश्चन निकल जाएगा, बिकॉज उसका रिएक्शन तुमको आ गया. So there are two reasons, and this I've tried. This now I'm not experimenting with you. I've tried for the last 20 years with my students. Second round solving rate, अगर first round 30% है, second round 60% हो ही जाएगा. And 30% solving rate first round is somebody who's very poor. Normal solving rates 50, 70, 80% रहेगा first round में. Level of difficulty पे भी depend करेगा, लेकिन just persevere. लोग गलती क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ किसी से पूछ लेते हैं. गलती क्यों है ये? Because when you do a question, I told you the 3 modes. You can study theory, you can do assisted problem solving, you can do self problem solving. Theory में you don't learn problem solving. When you do assisted problem solving, you learn skills, but your belief does not go up. Your belief is there. When you do a problem on your own, when you self problem solve, your learning ratio is higher and your belief growth ratio is also higher. तो अगर तुम सिर्फ assisted problem solving में dependent हो on your exam throughout your preparation, exam में question में फंसोगे, you don't have a doubt clear resolution mechanism inside your head. So ultimately the challenge is, in every chapter the challenge is going to be, can I self problem solve 250 questions? 250-300 क्वेश्चन सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कैट में तुम्हारा आराम से इस तरह के आहिस्ता साल वाले कैट में तुम 14-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. So challenge is just that, getting stronger, taking assisted problem solving as much as you want, not on the questions you could not solve. You want more assisted problem solving, watch more classes. हम लोग के पास तो अनलिमिटेड है. हम लोग लास्ट 5 साल का कैट कोर्सेज वी हैव बीन ऑनलाइन. लास्ट 5 years का कैट कोर्स का मोस्ट पावरफुल मॉड्यूल्स को डाला हुआ है हम लोग ने. कोई भी टीचर हमारे यहाँ लास्ट 5 years में पढ़ा है, सबका कोर्स हमारे पास अवेलेबल है विद देयर क्वेश्चंस एंड व्हाट दे हैव टॉट. तो अनलिमिटेड है. ऑन टॉप ऑफ दैट वी कीप एडिंग मोर कंटेंट. अभी मैं हर चैप्टर पे, हर ब्लॉक पे 100 मस्ट नो क्वेश्चंस का वीडियोस बना रहा हूँ फॉर माय 24 स्टूडेंट्स, कि किसी को असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग और चाहिए तो ले ले इसे. So go to those and then come back to your self problem solving, because you are saying, okay, let's say Arun Sharma book is my self problem solving question bank. उसमें मैं किसी टीचर का इंटरफेरेंस नहीं चाहूंगा. That has to be an attitude of yours. I don't want any help in this book, because this is the book which I'll solve and then I'll go to the mocks and I'll be ready. And if required, what I've seen is most people round 1, round 2, round 3. 3 राउंड में तुम्हारा ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर हो जाएगा. तो बहुत ही पुअर होता है उनको 5 या 6 राउंड लगते हैं. डू यू हैव द टाइम? द आंसर इज यस, बिकॉज द फर्स्ट राउंड इज 7 days per chapter, 1 week per chapter. When you go back to a chapter second round, you're not going to do the theory again. तुम सिर्फ उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखोगे मैक्सिमम और खुद से ट्राई करोगे. So second round might be half the time, maximum 3 days. फर्स्ट राउंड अगर 25-30 hours है प्रिपरेशन का, सेकेंड राउंड 6 to 8 hours का होगा, 10 hours का होगा. थर्ड राउंड माइट जस्ट बी 5 hours. फोर्थ फिफ्थ राउंड 1 घंटे का भी होता है, 1-2 घंटे का भी होता है. जब फिफ्थ राउंड पे आते हो सिलेबस के, यू माइट हैव अ सिचुएशन जहां पे मंडे सुबह बैठे, शाम को 5 चैप्टर का हो गया. So if we timeline this,
if I'm taking 24 weeks for this, and during these 24 weeks, I'm also doing round twos of, let's say, 7 to 10 chapters. So 24 weeks will be 5 months approximately. So we are talking about April end. So April end पे ये situation आ गया तुम्हारा. May, June में you're completing your round twos. तो जून तक तुम round 2 complete कर रहे हो. You're starting your mock test here. जुलाई में you're doing round 3. जो chapters clear हो गए, 250 questions solve हो गए, you're okay now. The focus will then shift कि previous year questions कर लेते हैं और mock test करते हैं. जो chapters में दिक्कत हो रहा है उसमें round 3 करो. And then on requirement round 4, 5, 6 on other chapters during this time. This is a challenge. This is a process. But be very clear about this. One thing I told you, this question bank is my question bank. I'm going to solve this without interference of any teacher or any friend. मैं किसी को interfere करने नहीं दूंगा. Because problem क्या होता है? मैंने एक set of questions उठाए. ये set of questions built है for my growth. इसको अगर मैं कर लूंगा तो मेरा ग्रोथ आ जाएगा और मेरा बिलीव भी बढ़ जाएगा. तो मेरे से इतना हो गया, इतना नहीं हुआ. When I take the normal students approach कि इसका डाउट क्लियरिंग पूछ लेते हैं, डाउट पूछ लेते हैं, तो इसका ग्रोथ स्टंटेड हो गया. इस क्वेश्चंस का 200 क्वेश्चन तुमसे हुए, 100 क्वेश्चन नहीं हुए. जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको पूछ लिए, तो उसका लर्निंग कहाँ गया? Assisted problem solving learning is fraction of the problem solving of the learning you get in self problem solving. तो इसका लर्निंग मिसिंग हो गया, बिलीफ भी नहीं बढ़ा. अब बिगर प्रॉब्लम नाउ इज तुमको वो लर्निंग वापस लाना है, तो तुमको इस तरह के क्वेश्चन खोजने पड़ेंगे. कहाँ से खोजोगे? किसी और रिसोर्स से लाओगे तो सब मिक्स्ड होगा. 100 थोड़ी कोई देगा तुमको, ये 100 वाले हैं. Will be mixed. तो तुम 200 क्वेश्चन बचे थे, तुम 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन जब फिर उठाओगे तब वो 100 मिलेंगे. और तुम्हारा अप्रोच है कि जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं उसको पूछ ले, तब तो अनलिमिटेड लूप है. तो इस अनलिमिटेड लूप में चले जाते हैं लोग, which is why they are not even able to solve 4 questions in the exam. तुम यहाँ फुल स्टॉप करो कि okay, this is my question bank, I am not going to go outside this. लेकिन मैं इसको खुद करूंगा. इसके बाद मॉक टेस्ट का हर क्वेश्चन जानूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन जानूंगा. आई एम रेडी. यू विल हैव द थॉट्स इन द एग्जाम. ऑल द थॉट्स इनसाइड द एग्जाम दैट यू नीड, यू विल हैव देम. ये वो टेम्पटिंग होता है, पूछ लेते हैं. टिक लगाने का आदत है, क्वेश्चन हो गया, टिक लग नहीं रहा है तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग होता है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 10 मिनट्स का लिमिट रखो. फर्स्ट राउंड में 10 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ दो. एक्सेप्ट कि इट्स बीटिंग यू राइट नाउ, बाद में आगे वापस आएंगे. नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि तुम बैठोगे कि आज ये एक्सरसाइज करना है, तुम एक क्वेश्चन में 30-30 मिनट लगा रहे हो भी नहीं रहा है. तुम 2 घंटे का टाइम निकाले थे, 3 घंटे का टाइम निकाले, 3 घंटे बाद देखते हो क्वेश्चन 7 पे हो, तो अगले दिन बैठोगे नहीं, बोलोगे इंग्लिश पढ़ लेता हूँ. दिस इज अ रियल प्रॉब्लम. तो कीप मूविंग. जस्ट से कि ओके सेकंड राउंड के लिए आई विल कम बैक. Because the philosophy is very simple. I go to the gym, suppose. मेरे को अपना let's say arm strength बढ़ाना है, तो मेरा जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला है कि ये 50 किलो का वेट उठाएगा, तो मैं जाके उठाने की कोशिश करता हूँ. मेरा स्ट्रेंथ नहीं, मेरे से नहीं उठता है. तो एक रास्ता है कि मैं उसको बोलूँ कि तुम आ जाओ, इधर से तुम उठाओ, उधर से मैं उठाता हूँ, साथ में उठा लेते हैं. वेट ही उठाना था ना, उठ गया, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा क्या? Objective is to get stronger. Am I getting stronger? तो ये वाला काम वही है. मेरे से उठ नहीं रहा है, तुम उठा दो साथ में. I have not gone to. I forget that I have not gone to the gym for that. So struggle with this. Don't avoid the struggle. हम लोग मेरा philosophy again in the course cycle, मेरा philosophy अगस्त के बाद मैं सब डाउट को मतलब ओवर आई एम विलिंग ओपन टू टेकिंग सेशंस फॉर, मतलब मैं बोलता हूँ लोगों कि 6 घंटे का सेशन रख लेते हैं,
इस चैप्टर, ये 2 चैप्टर के सब डाउट जितने हैं तुम बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ. आई हैव टेकन सेशन लाइक दैट. सो वी आर, मेरा फिलोसफी अगस्त के बाद होता है कि चलो ठीक है, तुमसे अभी तक नहीं हुआ है तो चलो सीख लो, एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लेना. तो सितंबर अक्टूबर में माय आवर फिलोसफी चेंजेस. विल गिव यू डाउट क्लियरिंग फॉर एवरी क्वेश्चन. यहाँ पे वी विल गिव यू, बिकॉज एज एन इंस्टीट्यूट अगर हम बोले डे 1 पे कि हम लोग डाउट क्लियरिंग नहीं देते हैं तो आधे लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे हमको. इसलिए हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, बट फॉर द रियल स्टूडेंट आई टेल देम डोंट अटेंड देम. Don't go into those with doubts, because you keep your doubts. ठीक है. और if you don't want to listen to me, listen to Einstein. आइंस्टाइन को तो कोई निगेट नहीं कर सकता. आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था, से कोई पूछा कि हाउ डिड यू क्रिएट सो मच knowledge in one lifetime? His answer was, I stayed with the problem longer. It's a classic statement which gives you everything that Einstein, but he said that I could see so much because I stayed with the problems longer. हम लोग का व्हाट्सएप जनरेशन में वी डोंट वांट टू स्टे विद प्रॉब्लम्स. हम लोग चाहते हैं इमीडिएट सॉल्यूशंस. वी डोंट थिंक थ्रू. राइट? Remember, you're playing for a 10 crore bank balance versus a 200 crore bank balance. Remember that. It's possible. It can happen in your lifetime, in 20 years flat. The core requirements are hitting one level below the top at around 40. If you reach that point, you'll be pulled up. You'll be one of the leaders, and वो top का 5-7 लोग का decision ऐसे ही होता है. They'll be firing people, they'll be not giving salary raises, but आपस में वो लोग 5 लोग मिलकर decide करते हैं कि मेरा salary 10 crore होगा. They take that decision. You can't tell them. That's how the world is. उधर they'll be firing hundreds of people, कितने लोगों को निकाल रहे हैं efficiency के लिए, etc. बहुत unprofitable हो गया है. But they don't touch their salaries. So you want to reach that point, right? And to reach that, I mean, the positions are open. None of these positions are going to be by the incumbents. Modi ji will not be the prime minister in 2050. कोई तो और आएगा ही ना. So all positions are open, right? So I hope you enjoyed this, and this was eye-opening. And whatever you take from it, just remember that first point I told you, because that I think is the most important. When you're doing something, do it well. Make that a precondition in your life. I have seen my life change completely. To the point that अब मैं अगर कुछ नहीं करना है मेरे को, तो मेरा एक उंगली भी नहीं उठेगा उसके लिए. लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो I'll do it to the best of my ability. So I think 7 months ago, 8 months ago, I can show you my photograph in March. I was completely over it. I had been over it for almost 20 years. 8 months ago, my tennis coach told me that you have to lose 17 kilos if you want to play tennis. I said, no, I want to play. So I've lost 13. Yesterday night, from 9:30 to 11, I had seen a reel in the afternoon of Nick Kyrgios service. So 9:30 to 11, I was practicing my serve. I was trying to replicate his action in my serve. I know I'm not going to be a tennis player or anything, but it's just the fact that that attitude that if I want to do something, I'll do it well. Why should I not do it well? Right? So I have my ambitions in my tennis also. There's an ITF master circuit which I go to play, but that's a different factor. It's not related to my career or anything. I already tell people that my main objective was fitness, which I've already got. So I've seen this कि जब भी मैंने कोई चीज अच्छे से किया है और फुल इंटेंसिटी के साथ किया, उसका आउटकम्स ही कुछ और रहा है. तो जब मैंने मीडियोकर काम किया तो Arun Sharma, 18-year-old, was just struggling in life. No future, nothing happening. और सब कुछ बदल जाता है. Your गाड़ी will change, your house will change, everything around you will change.
but you remember the core. Your life will only go up because in today's world you're only valued for what you do and how well you do it. This is not against fun. This is not about not enjoying your life. Enjoy it more. Enjoy it even more than what you do. But when you're doing your work, just bring an enjoyment into that and do it well. Thank you so much. Right, I'm open to any questions. Otherwise, my counselor will come in and talk to you. कोई questions है? Urgent या कुछ? I think online people, I did not see your chats today at all, but I think this was. There's one have it on. Yeah. What is it? How to manage college with cat? When you're doing college, do college. When you're doing cat, do cat. That's it. The simple answer. Right? Cat, I told you don't need to study more than 30, 40 hours a week. I told you 5 hours of DI and LR, 10 to 15 hours of verbal, 10 to 15 hours of quant, 15, 20 hours of quant maybe. 40 hours ka net hai, maximum. You got 168 hours in a week. Sir, Yeah. the gap year of like 2 years or so affect your entire process even after putting on the exam? A gap year is, I mean, a gap year is not taken very positively, but they'll ask you what you're doing in that time. So if you've got a credible story that you can talk about, then it's taken, it's this thing. So my answer to gap year solution is always that if you can work, you should work. If you can't for some reason or you don't want to do that, then in that case, around your reading, build a couple of passions. Build a couple of passion subjects. Right? तो management ही पढ़ लो, marketing पढ़ लो, digital marketing पढ़ लो, history पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो. I'll give you an example. मेरा एक दोस्त है, very close friend of mine. He was from IIT Delhi. Both of us are asked the same question. That Arun Sharma was asked this question in his interview at IIM Bangalore. Who's your role model? My answer was, my father is my role model. They asked me why and all. Amitabh Singh, my friend, was asked this question, who's your role model? In the same interview. He said, Rommel is my role model. The German general. Now imagine when you're an interviewer listening to these two people speaking, ये जो father is my role model कौन बोलता है? 9th standard का बच्चा बोलता है. Rommel is my role model कौन बोलता है? There's a superior intelligence in the room. You at least get that feel. तो Rommel role model अगर आप बोल रहे हो उसको defend कर लेते हो, you're through any interview. ठीक है? So that's the hint for how you answer that question. Yeah. Notes कुछ नहीं बनाए देते उसमें. It's about problem solving skills and building the reactions. So what you do is when you solve the questions, you'll automatically the reactions start building in your mind. DLR में कोई theory नहीं होता है. So hence there are no notes. It's just facing problems and this thing. जैसे see, I'll give you an example. When you learn things, there are two kinds of learnings in life. एक theory based subjects होते हैं. अगर मेरे को geography पढ़ना है तो मैं 5 साल theory पढ़ सकता हूँ. दूसरा skill based